learning. 2014 IIT Madras started it, and since then we are having at our college, Professor Rammege College of Engineering and Management, Badnira. Since inception, we are part of that NPTEL, and let me tell you, that is part of MOOCs and SWAYAM, one of the element for science and technology, and as many as 600 plus students from my college have got NPTEL certification, and more than 80 out of 92 faculty members, 80 faculty members have covered their courses modules which are required for career advancement scheme. So all the participants, as I talked to your director, Dr. Atik, he told me that all the participants are from science and technology, and they are basically from teaching fraternity. So it becomes my earnest duty, I will be failing in my duties if I cannot put before you the opportunities available, which will be definitely making our profession as a teacher more rewarding. Most of the times we come across the situation that under CAS, you have to complete those many 8 modules for on this, then only you will be eligible to get your API score, and then you will be able to get your career advancement scheme promotion. People come complaining, sir, I don't have opportunity, where should I acquire these modules and all. MOOCs and SWAYAM and NPTEL are the platform wherein you can go get those modules. They are recognized modules and they are creditable modules. I was really delighted to be a full session of 1.5 hours. Actually, it was 1 hour 45 minutes session of Honorable Chairman of UGC along with his team. When they presented, I have given my comments there also, congratulating them that they have made the people aware. And recently they are going to have their SWAYAM board meeting, in which all these things they are going to incorporate. Motivated from that only, I don't know how it happened, but when Dr. Atik talked to me saying, sir, you have to speak on MOOCs and SWAYAM, I just had an idea. Sometimes when Dr. Malkhede conducted a meeting at university regarding these MOOCs and SWAYAM, I have been part of this MOOC SWAYAM at Amravati University since the last 5-6 years. 2018, there was a UGC regulation, and after that there is an AICT regulation for inclusion of MOOCs and SWAYAM courses into our curriculum, and for which we have already started for science and technology faculty, and particularly in engineering and technology group, we have already incorporated this, that per semester they are allowing. Earlier it was 20%. Now they have made 40% of the courses can be taken by the students from MOOCs or SWAYAM courses, and that should be counted as the credit. Now, as rightly pointed out during the preface Aniket has given, so that time there is an apprehension that faculty and teachers, they think, sir, what will happen to me? मेरा क्या होगा? अगर ये स्वयं एंड मूक्स के कोर्सेज बच्चों ने ऑनलाइन लेना शुरू किए, तो फिर टीचर्स विल बी रिट्रेंच्ड, will the workload be reduced? Answer is blatant no. Please understand that these MOOCs and SWAYAM courses, when they are offered at any level, at any college, whether it is arts, science, commerce, or engineering college, at all the levels, it is going to be mentored by the faculty available at that. You may not be knowing that subject, but as a mentor, you have to be part of it. So don't be under any impression, or don't be scared if MOOCs and SWAYAM courses are coming in, then what will happen to our workload? As a mentor, if you are mentoring even a single student on a MOOC course, and it is a 4 credit or 3 credit course, then that will be counted as your workload. Please understand this. I am today going to talk what is MOOCs and SWAYAM, definitely. But then mainly I will try to awaken the teacher within you, so as whatever your expertise is there,
that you should utilize to develop a online course which can be part of MOOCs and SWAYAM. Today in the morning, Honorable Chairman said that in addition to IITs and NITs, where from they have taken the faculty for creating these MOOCs and SWAYAM courses and NPTEL courses, now they are diversifying it to other colleges also, which are having NAC score A plus, or which are autonomous, or which are having NIRF ranking. So all those teachers who are today participants, you can convey to your other colleagues as well, that if you are having expertise in any one of the subjects, I am going to tell today in my 1 hour session how to design and develop an online course which you can upload on MOOCs and SWAYAM by developing your own course. Let me tell you, I have an interaction with I will name that lady, great personality, and her course available on SWAYAM is very, very popular. Dr. Rekha Sharma from Home Science Department of Nagpur University, and she has developed a course on home science food technology. The course is about nutritional foods or something. It's a very popular course, and as many as more than 1,000 students have enrolled on it. Why I am giving that example, you can go and with her name, maybe if time permits, here only I will show you her course available on MOOCs and SWAYAM during demonstration. Otherwise, you can go just type the name of Madam Dr. Rekha Sharma and some course on MOOCs, so that course will be visible to you. Beauty of it is that when I attended that workshop, it was held at Ramdev Baba College of Engineering 2 years before COVID. There she has demonstrated how she prepared this course, and for that purpose, most encouraging for we people is 3 lakh was the royalty she was paid by MOOC SWAYAM platform, and remaining 10 lakh rupees have been total course content development. The budget was 13 lakhs, 13 lakhs, out of which 3 lakhs was the royalty paid to the teacher, and 10 lakhs they have invested on preparing that. It includes content preparation, rehearsal, shooting, editing, and so on, so on. I am going to tell you something here, which at our level also we can do. And if you prepare a video of your course, you can upload it on MOOCs and SWAYAM. If they verify it and find that it is up to the standard, then it will be included on the SWAYAM and MOOCs courses. So with this little background, why I am telling you this for the reason, okay, today my lecture is not going to be what is MOOC SWAYAM and what way it can be used. Rather, I will be showing you how to utilize your own expertise in a particular subject to become part of this MOOCs and SWAYAM. So with this, let us move to the main content of my today's topic. Design your own online course on MOOCs and SWAYAM. And let me tell you, by chance, suppose you are not able to put it on MOOCs or SWAYAM because of their quality checks and all. They have got particular quality checks that it should be this duration, this, that. But then there are other platforms available. For example, 2 of my courses, they are available on Udemy. Udemy, I have one course on 60 minutes guides to research methodology. And there is another 1 hour course on genetic algorithm. That is very peculiar. I normally provide access to those courses available on Udemy. If you find that your course is not acceptable by MOOCs or SWAYAM because of their quality parameters, you can upload it on Udemy,
And if you feel that Udemy is also not a platform where you should go, you can directly create your own channel on YouTube and put it there. Who has prevented? And secondly, you can have your own language. It is quite possible that you want to have some of my colleagues, some of my teachers at my college, they have in the Hindi, they have in Marathi courses on engineering and technology. So the see, as we say, internet has made the things very. The whole world has been converted into a global village. I will say it is not global village. It is everything is at your fingertip. ग्लोबल विलेज का तो कंसेप्ट भी अभी चला गया, विलेज ही नहीं रहा सर, वी आर पार्ट ऑफ द होल वर्ल्ड, यानी वो ग्लोबल होम हो गया है, ग्लोबल विलेज की बजाय इट इज ग्लोबल होम, एवरीथिंग इज एट योर होम. अभी अभी हियर द पीपल हु आर ज्वाइनिंग मी एट दिस मोमेंट, आई फाइंड दैट देयर आर सम 99 participants I see here. All these 100, अभी 100 हो गया है, देखिए, it is just increased to 100. Now 100 people, right? I am sitting at my home, you are sitting at your home, and we are interacting. What best can be the utilization of our time for interacting on a matter which will be very helpful for our career. So with this, now what does MOOC stand for and what its purpose is? Simple. MOOCs means massive open online course. MOOC stands for massive open online course, and it is designed to offer online courses to large number of participants across the globe, often for free, providing access to quality educational materials and facilitating the lifelong learning. That is the basic purpose. Today, if I will just add to it, today morning, when participation in our SWAM courses has been indicated, the total participation 1820 courses every semester, 1800 courses are being floated semester wise, and total number of participants who are benefited out of it in this year, what they told in the morning, is around 8 to 10 lakhs. 8 to 10 lakhs. Wider audience you are going to get. So MOOC, it is a general global term, stands for massive open online course, and to execute this MOOC at Indian environment, we have SWAM. How does SWAM differ from traditional online learning platform? SWAM stands for Study Webs for Active Learning for Young Aspiring Minds. It is an Indian platform designed to achieve the three cardinal principles of education policy. And what are those three principles? Access to everyone, irrespective of age, location, geographical boundaries, nothing. Equity, without age, without background, it is available to everyone, and with quality. All of them are with very good quality. So how does SWAM differ from traditional online platform? Unlike traditional platform, it focuses on creating courses that are interactive, prepared by the best teachers in the country, and are available free of cost to any learner. You can go and register for any course, whichever you want. It's not necessary that I will tell you, I registered for some of the courses which are not of any interest as such belonging to my profession. I am basically computing engineer as well as electrical engineer. So I teach courses on artificial intelligence, machine learning, and genetic algorithm, and so on. But then out of my interest, somewhere I register myself for animation. And the teacher who was teaching that animation course was the participant, one of the developers who developed Jurassic Park movie. What all animations were shown there,
Dr. Prabhat Kumar was the person, I think, who floated that course on. And that course, when we were trying to register, that time total number of users, learners were more than 1 lakh. It was a 3 months course, and it's free of cost. Only you have to register yourself and attend the course. If you are interested in getting certified and you want to have credit earned, then you have to pay 1000 rupees an examination fees, appear for the exam, and depending upon when you pass, you will be getting the certificate along with the credits. So that is available. Otherwise, best of the courses are available. You name anything now on total number of courses available across SWAM using NPTEL, then NITR, and IIM, IGNU, and YCMOU. All those are part of, all these giants are part of SWAM. So, more than 5000 courses are available. सीखने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी अपनी. That is the reason we have to focus. The things are available. Coming to, can anyone enroll in courses offered on MOOCs and SWAM? Yes. Anyone with internet access can enroll in courses offered by MOOCs and SWAM, regardless of their educational background or geographical location. No one can claim कि सर मैं तो बडनेरा में रहता हूँ, मुझे ये क्या एक्सेसिबल होगा क्या, और मैं तो 10वीं पास हूँ. अरे भाई, आपको, इफ यू आर हैविंग एपेटाइट फॉर लर्निंग, लर्निंग की कोई एज नहीं होती. जैसे टीचिंग की कोई एज नहीं होती है, वो रिटायरमेंट होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग. बट टीचिंग लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग टीचिंग एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. द मोमेंट यू हैव बिकम ए टीचर, you are going to be teacher forever, and the moment you are a teacher, you are going to be a lifelong learner. You cannot say कि sir मेरा तो area, when I passed out in 1981, that time only 3 branches of engineering were available: electrical engineering, civil engineering and mechanical engineering. So उसमें choice हमको एक ही थी, electrical engineering. I had the choice to go for electrical engineering as per my interest. Over the period of time, 1981, today it is 2021, if you consider more than 50 years something. So I should remain only electrical engineer. I mean, over the period of time, the electrical branch shooted out into electronics and telecommunication, that shooted out into computer science and engineering, shooted out to information technology, and now it is shooted out to AI and machine learning and whatnot. So as the things are progressing, as a teacher, you have to be lifelong learner. I am not boasting. Please don't consider if I say something on my part. I am just sharing with you this information. Over the period of my 36 years of teaching career, 40 different courses I have taught, subjects, learning and teaching. Because the moment when I joined this College of Engineering, Badnera, at that time we started with computer science engineering, where there were no teachers to teach that subject because it was an emerging branch. So we migrated into that area and then started learning what all these are there in those subjects. And while teaching, we have learned. And over the period of 4 or 5 years, we have developed a mastery. I am so comfortable on Java programming, C programming, C++ programming, web development, Python programming, that my genetic algorithm course, which is available on Udemy, is fully in Python, which is a recent programming language. So I cannot blame or claim कि अरे यार मेरा तो अभी 60 साल हो गए, मेरे 62 साल हो गए, मैंने सीखना चाहिए क्या? भाई सीखने की कोई उम्र नहीं रहती है, and you should not be ashamed of. As a teacher, you should be always open to things. So anyone with internet access can enroll in courses offered on MOOCs. और इसमें तो प्राइवेसी ऐसी है कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट दैट, अरे यार मैं अभी 65 साल का हो गया और मैं अगर एक नए कोर्स के लिए रजिस्टर करूंगा तो पीपल विल लाफ एट मी. लेट पीपल लाफ. If you are innovating some, if you are having a new idea, this is not me, I am not saying this. This is Steve Jobs who said, okay, if you are having an idea and you find that people are not laughing at it, then that is not an innovation. आपको एक आइडिया आती है कि भाई अभी मेरा 70 साल भी हो गए, 65 साल हो गए,
आई रिमेम्बर यस्टरडे, अभी आपको मेरा इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, तो बताया कि भाई आई हैव कंप्लीटेड, अंडर मी देर आर 25 कैंडिडेट्स कंप्लीटेड पीएचडी। यस्टरडे माई 26वें कैंडिडेट का कल वाइवा हुआ है और कल शाम को ही उसको पीएचडी अवार्ड हुई है in electrical engineering. It was my 26th candidate. The examiner who came from Nagpur University, he told me that, sir, at Nagpur University, there was a person who retired as a R&D manager from Crompton Grieve at the age of 65 years, and he registered for PhD in electrical engineering at the age of 65 years. You see, and then completed his PhD in 70 at the age of 72 years. क्या बोल सकते हैं? And today that person is holding, he has started 3 companies, and it was his appetite for learning that he registered himself. Electrical engineering था उनका area. He started 3 industries at Aurangabad. MIDC में उनकी 3 companies है. And along with that, he registered for PhD at Nagpur University under that person. And उन्होंने बताया मुझे कि सर, he registered at the age of 65 years, और 7 साल लगे उनको PhD कंप्लीट करने के लिए, एंड उस पे उन्होंने 3 पेटेंट पब्लिश किए हैं। देन स्कोपस जर्नल के पब्लिकेशन है। यू सी, दिस इज द एपेटाइट। सो देयर इज नो एज फॉर लर्निंग। चलो वापस आते हैं। Anyone with internet access can enroll in courses offered on MOOCs and SWAYAM regardless of their educational background or geographical location, and मैं उसके आगे ऐड करूंगा without their age. Age is a number, that's all. चलिए, so what type of courses are available on MOOCs and SWAYAM? A wide range of courses across various disciplines: engineering, humanities, management, language learning, mathematics, science, catering to diverse learning needs and interests. And today morning only I came to know that for medical field there is separate ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली के अंतर्गत उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज का इंटर ये बनाया है, नेटवर्क है, जहां पे मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेस दे आर टीचिंग टू पोस्ट ग्रेजुएट students of medical sciences. So they are available on that. And one of the deans of medical colleges, he requested to honorable chairman of UGC के सर हमको भी स्वयं में इंक्लूड कीजिए। तो दे इंडिकेटेड कि भाई AIMS के अंतर्गत है वो, आप वहां पे जाके उनसे कांटेक्ट कीजिए एंड देन आस्क देम टू गेट कोलैबोरेटेड विद स्वयं। पॉइंट इज दैट wide range of courses. Are certificate provided upon completing courses on this platform? Yes. Participants can always receive certificates upon completing courses on this platform, sometimes for free or for a nominal fees, which can be useful for professional development or academic credit. यहाँ पे ऐसा है कि अभी उन्होंने चेंज कर दिया है. They have made it that you pay fees for examination, get yourself examined. But today morning only I came to know that earlier it was 1,000 fees, which has been reduced for open category candidate to 750, and for economically weaker section student they have made it simply 500 rupees an examination fees. So, and that exam is very strict and proctored based exam. So those certificates and credits, they carry value. So certificates can be. How do MOOCs and SWAYAM facilitate interactive learning? These platforms use various tools like discussion forum. उनकी खुद की सब्जेक्ट की डिस्कशन फोरम्स होती है. They give you quizzes, online quizzes, peer assessments, and interactive videos to facilitate interactive learning and engagement among participants. So likewise, as and anytime, anywhere learning है. So you can join those things as a learner. But my purpose of giving this background is that थोड़ा सा अपने को मालूम रहेगा कि मूक्स और स्वयं कैसे यूज होता है, उसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या क्या सब्जेक्ट है, कौन कौन से एरिया में है. इफ यू नो दिस, देन त्याच्यावरून आपल्याला स्वतः समजा एक कोर्स डेव्हलप करायचा असेल तर हे बॅकग्राऊंड माहीत पाहिजे. अँड दॅट इज द रिझन आय एम जस्ट ब्रीफली इंडिकेटिंग ऑन दिस. सो व्हॉट रोल डू इन्स्ट्रक्टर्स प्ले ऑन मूक्स अँड स्वयं? येस,
that apprehension, okay, if already available course is there and 40% of the courses are taken by, it is going to be made compulsory. You please understand. NEP, National Education Policy 2020 च्या अंतर्गत all over India, you cannot do away with it. Whether you like it or not, it is there. And we have to accept it. वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, अरे मला आवडत नाही, यू डोंट, वो आवडण का सवाल ही नहीं है यहाँ. NEP नेशनल लेवल पॉलिसी है एंड इट इज फॉर ओपननेस. एज राइटली सेड, वो जो मूक्स एंड स्वयं का पर्पज है, इक्विटी, एक्सेस एंड क्वालिटी, they want to make through NEP also. अभी अपना ये जो लेक्चर चल रहा है, that lecture is under NEP only. How we can have a mapping of NEP guidelines to our actual courses and all. So what role do instructors play on MOOCs and SWAYAM? You act as a mentor. Instructor design the course content. Yes, you can, including lectures, readings and assessment, and may also interact with the students through forums or live sessions, providing guidance and feedback. Those who are the instructor registered there, the course might have been developed by someone else, but if you register there as an instructor, so SWAYAM platform, they will assign you some course of your interest where you will be interacting with the students. So instructors design the course content, they include lectures, reading and all. How do MOOCs support lifelong learning? Yes, by providing access to vast array of courses in different fields. These platforms support lifelong learning, allowing individuals to acquire new skills or knowledge at any stage of their life or career. Life to infinite ho gaya, career is limited to a particular duration. So during that, you can have access to all the courses. Are there any prerequisites for enrolling in a course, MOOCs or SWAYAM? No. Most courses do not have prerequisite and are designed to be accessible to anyone interested in the subject matter. कोई उसका क्या बोलना चाहिए, कोई CET नहीं है. There is no competitive exam or something कि आप उसका स्कोर करेंगे तो then you will be eligible for this or that. Nothing. You are interested in, go there, identify the course, and when it is on, register and go on. Abhi, those courses which have been floated by SWAYAM and MOOCs, 29th February, 28th February is the last date for registering. So they are available. So of your own interest, you can just search and get access to it. Anyone interested in the subject matter, though some advanced course may recommend prior knowledge or experience, but those are the advanced courses. और अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि भाई ये प्रायर नॉलेज मैं पैरेलली एक्वायर कर सकता हूं या कर सकती हूं, सो देन इट इज ओपन. इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. हाउ डू MOOCs and SWAYAM handle assessment and grading? Yes, assessment vary by course and may include quizzes, peer reviewed assignments, projects and exams with grading mechanism in place to evaluate and provide feedback on a learner's performance. इनका प्रॉक्टर बेस्ड एग्जाम होता है एंड इट इज वेरी वेरी ऑथेंटिक, बिकॉज ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब चलता है तो इन सिमिलर सब्जेक्ट beside you the another person is sitting beside you on online exam होता है और बिजी लैंड में, और ये आयन पे उनके सेंटर्स है, NPTEL के एग्जाम सेंटर्स. TCS is handling that examinations. सो 2-3 घंटे का ऑनलाइन पेपर जो होता है, रैंडमली क्वेश्चन सर, एक ही सब्जेक्ट में आप एक टर्मिनल पे बैठे हो, आपके बाजू में वही सब्जेक्ट का दूसरा कैंडिडेट बैठा है, यू विल फाइंड दैट द क्वेश्चन आस्क्ड टू हिम इज टोटली डिफरेंट देन द क्वेश्चन आस्क्ड टू यू, बिकॉज इट इज ऑनलाइन असेसमेंट. सो ईच वन ऑफ द कैंडिडेट विल बी गेटिंग डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, different objectives and so on. So assessment and grading is done. But एक ही है कि when you want to get yourself graded, you have to appear for exam. For that purpose, you have to pay the fees. Otherwise, courses are free. What are some examples of highly successful online courses? Yes, ये 2-3 courses मैं just mention कर रहा हूँ यहाँ पे. We don't have that much time to go into the details of that. But one of the courses I will indicate you just now.
some of the examples of highly successful online courses. देखिए क्या सक्सेस रह सकती है स्वयं और मूक्स के वाले कोर्सेज में नहीं दिखाऊंगा आपको. द मोस्ट पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब, कोर्सेरा is one of the platform like our swam. Then there is a course on introduction to computer science by Harvard University on edX and learning how to learn. ये course I will suggest to each one of us. Even I have not gone through this course, but learning how to learn by Barbara Oakley and Terence Sejnowski on Coursera. These are the three most popular of the courses available. Millions of learners worldwide. Millions of learners. For example, what made machine learning by Andrew Ng so successful? Its success can be attributed to the high demand for artificial intelligence. ये machine learning का जो course है, it is AI based, artificial intelligence, hot cake nowadays. Skills in the job market. And let me tell you, तो आप ये जो 97 participants अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, forget about your background, forget about the language. अगर आपको ये लगता है कि सर ये इंग्लिश मीडियम में है, मेरे समझ में आएगा कि नहीं आएगा, you can have a translated version of that course. Things have advanced to that extent. So you can have this course learned. Machine learning you can also learn. Only appetite for learning should be there. इसमें reason for this success is high demand for AI and machine learning skills in the job market. दूसरा, एंड्रयू एनजी, उनकी reputation AI community में ऐसी है कि he is the Einstein of artificial intelligence. Comprehensive curriculum है and the practical application of theory through programming assignments इतने rigorous है कि after completing that machine learning course, honestly, anyone 10वीं पास भी बच्चे ने अगर ये मशीन लर्निंग का कोर्स उसको इंटरेस्ट है तो किया है ना. आई हैव सीन यंग पीपल विद 11-12 वाले बैकग्राउंड के, you know, and one of the examples is my son only who did this machine learning course of Andrew Ng. He only told me कि सर पापा ये जब बताएंगे आप मूक स्वयं पे तो एंड्रयू एनजी, ही इज द फादर ऑफ एआई, उनका कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए आप आपके पार्टिसिपेंट्स को, सो दैट एज यू आर मोटिवेटेड दे विल आल्सो बी मोटिवेटेड. सो दैट इज द रीजन. और यू कैन हैव लर्निंग ऑन योर ओन पेस. वो एंड्रयू एनजी आपके पीछे लगने वाले नहीं है कि भाई आपने असाइनमेंट आज ही क्यों कंप्लीट नहीं किया. यू से दैट मुझे 7 दिन लगेंगे, 7 दिन में कंप्लीट करो. आप वो कोर्स है 3 महीने का, आप उसको 3 साल में कंप्लीट करो. बट देन एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल फाइंड दैट यू आर ए गुड मशीन लर्निंग प्रोफेशनल. YCS50 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का कोर्स है. इंपैक्टफुल क्यों है? इट ऑफर्स ए सॉलिड फाउंडेशन इन कंप्यूटर साइंस, एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल बाय डेविड मलान, वाइड रेंज ऑफ चैलेंजिंग प्रॉब्लम सेट्स एंड एक्सेसिबिलिटी टू लर्नर्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स, मेकिंग कंप्यूटर साइंस एजुकेशन एक्सेसिबल टू ए ग्लोबल ऑडियंस. ये उसका इंपैक्टफुल था. तीसरा है ये इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, लर्निंग हाउ टू लर्न. This lady has taught us how to learn. It addresses the universal need for effective learning strategies, presents complex cognitive science concepts in an accessible manner, and provides practical tips and techniques applicable across various fields of study. Mathematical background का कोई सब्जेक्ट है उसको कैसे लर्न करना चाहिए, लैंग्वेज है उसको कैसे लर्निंग करनी चाहिए, थेरोटिकल सब्जेक्ट है और it is social science related subject, or it is medical science related subject, or it is a law related subject. So across the domain, how should we learn? Cognitive science के concept बता के, and as a teacher, I think this is the most appropriate course for us, so that इसमें अपने को not only we get the tips and tricks to learn, बट हमने हमारा कोर्स कंटेंट कैसे डिजाइन करना चाहिए सो दैट वो सामने वाले लर्नर को समझ में आएगा. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज विच आई वुड सजेस्ट कि एज ए लर्नर वी शुड नो हाउ टू लर्न. What common factors contribute to the success of these courses? Common factor, what made these courses very successful is high quality content
एनडीयूएनजी ने उसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 ईयर रिसर्च करके वो कोर्स डिजाइन किया होगा. रिस्पेक्टेड एंड एंगेजिंग इंस्ट्रक्टर्स, दे आर एंगेजिंग इंस्ट्रक्टर्स, रेलिवेंस टू द करंट मार्केट डिमांड्स. मार्केट में क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट द कोर्स हैज बीन टेलर्ड. प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस which are live applications and the ability to address broad learners need and interests. He addresses as if you are learning that subject for the first time without assuming any background, and as if the child is of just 12 10 years 12 years of age, whether he is 62 years or 12 years, across the age, across the background, and then this is what made them very successful. Now we would like to dive into planning our online course. यू डिसाइड, टॉपिक आपको डिसाइड करना है. आपको जो भी एरिया है आपके इंटरेस्ट का, वहां पे जैसे मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक था जेनेटिक एल्गोरिथम. फॉर दैट आई हैव डेवलप्ड वन ऑनलाइन कोर्स. अर्लियर आई हैड, पहला द फर्स्ट कोर्स ऑफ ऑनलाइन कोर्स विच आई इंट्रोड्यूस्ड was on research methodology, because lot of my PhD students used to come and discuss with me कि सर research methodology में हमने कैसा क्या करना चाहिए, what are the steps we should follow and all. So for them, I created a 60 minutes guide to research, and that I planned. It was focused on 60 minutes only. So that छोटा सा कोर्स है, 1 घंटे का. Anyone can take it, because रिसर्चर को उसके रिसर्च में पहले काम करना है. अपने कोर्स ही 3 3 महीने तक के अगर करेगा वो, तो बाकी का उसका क्या करे. सो दैट वाज द रीजन इट वाज कन्फाइंड टू टीचर. तो प्लानिंग योर ऑनलाइन कोर्स, कि आपका ड्यूरेशन कितना रहेगा, आपके ऑडियंस कौन रहेंगे, फिर वो क्या कंटेंट आपको दिखाना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑल दिस कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्लानिंग अवर ऑनलाइन कोर्स. व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स. सो व्हेन यू आर प्लानिंग, पहला क्वेश्चन रहेगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी माई लर्निंग आउटकम, व्हाट कोर्स आई एम ऑफरिंग. इसमें से वो बच्चे को क्या मिलना चाहिए, वो लर्नर को क्या मिलना चाहिए, वो एज ए टीचर पहले अपने ही कंसेप्ट क्लियर चाहिए. टीचिंग इज ए प्रोफेशन, एंड मोस्ट ऑफ, अगर यहाँ पे 98 पार्टिसिपेंट्स आई एम लुकिंग एट दिस मोमेंट, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, 99 पार्टिसिपेंट इफ आई कंसिडर, आई एम basically an engineer by training. I did my BTech, MTech, PhD, all in engineering. So by training, I am engineering by training, but teacher by profession. मुझे कभी किसी ने ये नहीं सिखाया हाउ टू टीच. हमारे पास में कोई डीएड की या बीएड की या एमएड की डिग्री नहीं है. एंड ऑलमोस्ट ऑल, अगर आपके साइंस टेक्नोलॉजी वाले टीचर्स होंगे, मे बी बाय चांस टू गो इनटू टीचिंग फील्ड, आपने बीएड वगैरह किया होगा तो दैट इज अपार्ट. अदरवाइज लेक्चरशिप के लिए कोई कंडीशन नहीं है. इफ यू वांट टू कम इन टीचिंग एट सीनियर लेवल, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, लॉ, ये पढ़ाने के लिए अगर आप आते हो, तो यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के लिए कोई डिग्री इन एजुकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. बीएड, डीएड, एमएड इज नॉट रिक्वायर्ड. कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं पे भी नहीं है. वो मीन्स वी वेर नेवर टॉट हाउ टू टीच. एंड सडनली आफ्टर कंप्लीटिंग माई एमटेक, आई केम टू द कॉलेज, and my head of that department said that go from tomorrow onwards, you have to teach control system to final year students. Well, I was never trained to teach. So we have to learn the tools of the trade, which we have learned. And how did we learn? We recall, मैंने तो वैसे ही किया है, पर सब शायद आप सब लोगों का भी एक्सपीरियंस वैसे ही होगा. द मोमेंट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाज अलॉटेड टू मी, आई स्टार्टेड स्किमिंग थ्रू माई फ्लैशबैक में जाके, भाई अपने बहुत अच्छे अच्छे टीचर कौन थे और उनका पढ़ाने का स्टाइल अपने को क्यों पसंद आता था. तो उस ढंग से अपन ने भी पढ़ाना चाहिए. या फिर समवेयर ऑन द अदर साइड, आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग ऑन एनी टीचर ऐसा, क्योंकि ये बोलना ही गलत है कि कोई टीचर अच्छा होता है या टीचर बुरा होता है. टीचर इज ए टीचर. इफ यू फील दैट अरे यार ये सर का जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आता है,
तो फिर उसमें से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे हमने पढ़ाना नहीं चाहिए. तो इनडायरेक्टली यू से ये टीचर इज नॉट ए गुड टीचर, इज ऑल्सो टीचिंग यू हाउ नॉट टू टीच. गेट इट? यानी अभी ये तो समझ में आता है अपने को कि भाई कोई टीचर अगर अपने को पढ़ा रहे हैं और अपने को उसका समझ में नहीं आ रहा है, तो देर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज टीचिंग, या फिर देर इज समथिंग रॉन्ग विद माई अंडरस्टैंडिंग. सो एज ए हिंट, एज ए टीचर, I should see that I will not imitate his behavior in my lecturing. और आपके जो बहुत अच्छे टीचर्स थे, what were the good things in them, और why I like that teacher as my best of the teachers. So फिर आप उनको imitate करो, and that is how we have learned to teach. So यहाँ पे when we are planning as a teacher, trying to imitate our best of the teachers in our life, parallel to that, start thinking on what are the learning outcome. ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए. सो फॉर दैट दे शुड बी क्लियर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स that describe what learners will be able to know, do, or demonstrate after completing a course. They nowadays, because of this NEC and NBA and OBE, outcome based education, that has made it compulsory that when you are designing a syllabus, before the content of the syllabus units are described, उससे पहले ही आपको ये कोर्स आउटकम लिख के देने पड़ते हैं. सो दोज आर द लर्निंग आउटकम्स. So learning outcomes are clear, specific statements that describe what learners will be able to know, do, or demonstrate after completing a course. They are measurable and observable. Those outcomes should be measurable and observable as well. Why are clear, measurable learning outcomes important? Because they guide the course design process. क्लियर हमको पता है कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल अभी ये जो मैं 1.5 घंटे का या 2 घंटे का आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसका आउटकम आई वाज वेरी क्लियर ऑन कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 1.5 आवर सेशन, उसके बाद में जो प्रैक्टिकल मैं असाइनमेंट आपको करने के लिए बोलने वाला हूँ, तो आई एम क्लियर ऑन दैट कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस 1.5 आवर सेशन, each one of the participants should be able to design his or her online course of his own interest. आउटकम ये रहेगा कि उसको उसका कोर्स, ऑनलाइन कोर्स डिजाइन एंड डेवलप करके उसके वीडियोस बनाते आने चाहिए. सो दे शुड बी वेरी क्लियर. क्लियर एंड मेजरेबल रहेंगे तो डिजाइन प्रोसेस इजी जाता है. इट इंश्योर्स अलाइनमेंट बिटवीन द कंटेंट, इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट. क्या पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, कंटेंट क्या पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ाना है, एंड असेसमेंट उसको कैसे इवेल्युएट करना है. एंड इट मेक्स इट क्लियर टू लर्नर्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम. नॉट ओनली इट विल मेक द थिंग्स क्लियर टू द लर्नर, टू द टीचर ऑल्सो, एंड टू द इवेल्युएटर ऑल्सो. सी अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम में ये सिस्टम है, वी आर नॉट ऑटोनोमस, वी आर एफिलिएटेड टू ए यूनिवर्सिटी. यहाँ पे क्या होता है, आप पढ़ाते हो, यू टीच वन सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट का पेपर सेटिंग कोई अलग पेपर सेटर करता है यूनिवर्सिटी लेवल पे. यू हैव टॉट विच इज बीइंग असेस, रादर उसका पेपर सेटिंग किया गया है बाय पर्सन बी. यू आर पर्सन ए हु हैज टॉट दैट सब्जेक्ट. पर्सन बी इज सेटिंग द पेपर. द स्टूडेंट इज appearing, पर्सन डी इज appearing फॉर द एग्जामिनेशन. Person E is evaluating it. You get it? So A, B, C, D, E ये जो है पर्सन ए से लेके तो ई तक, ये सब लोगों को ऑब्जेक्टिव्स क्लियर चाहिए. अदरवाइज आई एम टीचिंग वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन बेस्ड ऑन द कंटेंट, वो सिलेबस पे से, और वो पेपर सेटर ने क्या किया कि वो कंटेंट देखने के बजाय टेक्स्ट बुक या जो रेफरेंस बुक्स थे वो उठाया, उसमें के क्वेश्चन उठा के डाल दिए. बच्चे बाद में निकल के बोलते सर ये क्या, जो पढ़ाया गया वो तो आया ही नहीं. There happens a mismatch. That is the reason we should have clear, measurable learning outcomes. So they guide the course design process only. Not only that, it ensures alignment between content, क्या पढ़ाना है, इंस्ट्रक्शन कैसे पढ़ाना है,
एंड असेसमेंट, उसको इवेल्युएट कैसे करना है। ये तीनों चीजें क्लियर हुई तो फिर वो जो लर्नर है, ही विल नॉट बी पुट टू एनी हार्डशिप and make it clear to learners what is expected of them. So it is important. So while you are going to design your course, online course, and you are going to make it deliverable, maybe on YouTube. YouTube पे डाल दो यार, don't wait for MOOCs and स्वयं अप्रूव करने के लिए। बेस्ट है एक छोटा सा वीडियो बनाइए, अगर आपके पास में वक्त है तो, बेसिक डेफिनेशन के लिए, या फिर आई विल गिव यू समथिंग विच आई एम प्रेजेंटली वर्किंग ऑन, आई विल शेयर विद यू। इसमें कोई छुपाने की बातें नहीं है। आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, दे इनडायरेक्टली आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम देम कि सर हमको एग्जामिनेशन के टाइम में ये चीज़ों को रिवाइज करने के लिए कुछ तो भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। So I have gone for preparing 100 frequently asked questions, और उसका मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है। एंड दैट कोर्स में जो एक वीडियो है, एवरी वीडियो इज मैक्सिमम ऑफ 7 मिनट्स ओनली। ये 60-60 मिनट के और 2-2 घंटे के वीडियोस देखने की बच्चों को आदत नहीं रही। प्लीज अंडरस्टैंड, जनरेशन हैव चेंज, गॉन आर द डेज। हमारा जमाना था जब दिस इंटरनेट वाज नॉट अवेलेबल, हम अपने लोगों का भी जो लर्निंग का फेज था, एट द टाइम वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन लाइब्रेरीज एंड टीचर्स के क्लास में क्या हो रहा है। तो 60-60, 70-70 बच्चे 3-3, 4-4 घंटे एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करते थे, एंड दे वी यूज्ड टू सिट, वी हैड द राइटिंग हैबिट्स। ये चीजें अभी कम हो गई। ऑनेस्टली रिकॉल योर एक्सपीरियंस विद एनी क्लास, 45 और 40 मिनट के ऊपर बच्चों को आप होल्ड नहीं कर सकते क्लास में। आप जो कुछ भी पढ़ा रहे हो वो उसके फिंगर टिप्स पे, आप जो पढ़ा रहे हो वही वहां पे, उसको अगर आपने मोबाइल अलाउ किया तो ही विल ओपन गूगल, वही पर्टिकुलर टॉपिक पे वो वहां पे बेस्ट वीडियो निकालेगा और उसको सुनेगा। एंड यू आर टीचिंग समथिंग एंड ही इज लर्निंग समथिंग एल्स, एंड ही विल बी मोर कंफर्टेबल। दैट इज द रीजन आजकल बच्चों में ना तो लिसनिंग एबिलिटी रही है, ना तो राइटिंग एबिलिटी रही है, and that is the reason for this kind of examination they are finding very difficult. So इनिशियल स्टेज में आप, आपका भी जो सब्जेक्ट है उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन छोटे छोटे निकालिए। सिंपल मैंने सी प्रोग्रामिंग के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बनाए हैं। आई हैव prepared 100 questions, and maybe next week I am going to release that course of that is going to be on first on YouTube, and then I am going to upload it on Udemy as a 100 frequently asked questions on C programming, so that they will be useful to the students also, and they will be useful to the for कैरियर ऑल्सो। मीन्स जॉब के इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जब जाते हैं बच्चे, तो दे कैन गो फॉर। तो दिस काइंड ऑफ वीडियो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर। आपका जो भी लाइकिंग का सब्जेक्ट है उसके ऊपर मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकालिए, और ऐसे ही जो मैं पीपीटी आपको दिखा रहा हूँ, हियर ऑल्सो आई एम शोइंग यू की क्वेश्चन आंसर। ये आइडिया मुझे कहाँ से आई है? व्हेन आई डेवलप दैट दोज 100 क्वेश्चंस फॉर सी प्रोग्रामिंग, therefrom I got the idea कि when you are asking a question and providing an answer, it keeps curiosity on, लर्नर की क्यूरियसिटी ऑन रहती है। अरे सर ने क्या दिया है क्वेश्चन, हाउ कैन इंस्ट्रक्टर इंश्योर लर्निंग आउटकम्स आर मेजरेबल। ये क्वेश्चन देखने के बाद में आपके दिमाग में आता है कि अरे हाँ यार, ये सवाल तो मेरे भी दिमाग में था कि वो लर्निंग आउटकम मेजरेबल कैसे रहेगा। तो उसका आंसर ये है, बाय यूजिंग एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स दे डिनोट ऑब्जर्वेबल एक्सेसिबल असेसिबल एक्शन, जैसे एक्सप्लेन, डिजाइन, एनालाइज, क्रिएट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बंद कर दिया अपन। यू रिमेंबर लॉन्ग बैक वी हैव टेकन डिसीजन इन आवर एकेडमिक काउंसिल एंड बोर्ड ऑफ स्टडीज के इन आवर क्वेश्चन पेपर्स देयर विल नॉट बी, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो वी मेड इट वेरी क्लियर, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, हमने वो शॉर्ट नोट्स ऑन टाइप के क्वेश्चन ही बंद कर दिए, क्योंकि इट इज नॉट मेजरेबल।
explain, design, analyze, create and specifying the context of criteria for performance. आप उसको कॉन्टेक्स्ट एंड क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस पहले से बता दीजिए आप कि ये डिजाइन में से मुझे क्या एक्सपेक्टेड है. व्हेन आई से डिजाइन समथिंग, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉन्टेक्स्ट. उसके हिसाब से आप उसको फिर क्वेश्चन के सामने मार्किंग देते हो कि भाई ये इसको क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस ये रहेंगी कि ये डिजाइन को मैं 13 मार्क दे रहा हूँ आपको. एनालाइज करने के लिए पार्ट ए है तो इसको 7 मार्क रहेंगे. एक्सप्लेन इसको 3 मार्क रहेंगे. समथिंग डिफाइन, these are the actionable verbs. So how can you make learning outcomes measurable? वो मेजरेबल करने के लिए आप उसको जब असेस करते हो तो असेस इट बाय ऑब्जर्वेबल एक्शंस थ्रू एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब्स है, नाउन नहीं, वर्ब्स. दे शो सम एक्शन. एक्सप्लेन, डिजाइन, एनालाइज, क्रिएट. कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स? यस, मैं जो आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ ये एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस से, बट आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, बाय एक पर्टिकुलर कोर्स है जो वेब डेवलपमेंट पे है या HTML पे है. सो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स लर्नर विल बी एबल टू डिजाइन ए बेसिक वेब पेज. ये कोर्स वेब डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट करने के बाद विच इज ऑफ 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी 4 से 5 घंटे का होगा, वहां पे अपन क्लियर कट दे देते कि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स लर्नर विल बी एबल टू डिजाइन. उसको वेब पेज पढ़ते आना चाहिए या नहीं, ही शुड बी एबल टू डिजाइन ए बेसिक वेब पेज यूजिंग HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड कैस्केडेड स्टाइल शीट, CSS यूज करके उसको एक वेब पेज डिजाइन करते आना चाहिए. दैट विल बी द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एक्सेसिबिलिटी. तो ये आप मेजरेबल आउटकम बता दिया. सो पहले ही आपने वो कोर्स कंटेंट में बता दिया वो लर्नर को कि बेटा ये कोर्स करने के बाद में तुझे एक वेब पेज डिजाइन करके मुझे देना है ऑल फ्रेश. देन ओनली आई विल गिव यू 100 आउट ऑफ 100 और वॉट एवर. सो एवरीथिंग इज क्लियर. हाउ मेनी लर्निंग आउटकम शुड बी देयर ए कोर्स शुड हैव? कितने? 8 से 10 बहुत हो गए. ए कोर्स शुड हैव ए मैनेजेबल नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम. उसको पूरा सिलेबस के अगर आप बताएंगे कि 6 यूनिट है और 6 यूनिट में समझ लीजिए 48 टॉपिक्स है, तो लर्निंग आउटकम 48 टॉपिक्स नहीं रहेंगे. ए कोर्स शुड हैव ए मैनेजेबल नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स, टिपिकली बिटवीन 5 to 8, टू एंश्योर डेप्थ ऑफ लर्निंग विदाउट ओवरवेलमिंग लर्नर्स. उसको बम्बार्डिंग मत करो आप. देखिए लर्निंग साइकोलॉजी में यू शुड अंडरस्टैंड, और अभी आप जब मेरा लेक्चर सुन रहे हो तब आपको भी ये रियलाइज हो रहा है, यू आर ऑल टीचर्स, यू मस्ट हैव बी रियलाइजिंग कि आफ्टर 20-25 मिनट्स ये मोनोटोनस हो जाता है. इट इज अ नेचुरल. सो व्हेन यू गो एंटर इनटू योर लेक्चर रूम, आप क्लासरूम में जब जाते हो पढ़ाने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू शुड नॉट बम्बार्ड योर स्टूडेंट मोर देन 7 पॉइंट्स मैक्सिमम. 7 न्यू आइडियाज के ऊपर 8th 9th 10th जो आइडिया जाती है वो बच्चे के टेंजेंट जाती है. लर्निंग साइकोलॉजी, आई एम नॉट बोस्टिंग एज सच, प्लीज. मैं जो बीच में बोलता हूँ तो उसको आप कुछ अलग अलग मीनिंग से मत लीजिए. माई PhD इज इन इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम. मेरा PhD टॉपिक ये था, फजी न्यूरल इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब. यानी ट्यूटरिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग कैसे करना चाहिए उसके लिए हमने एक पैकेज डेवलप किया था, ऑन विच आई हैव 7 पेटेंट्स. मेरे PhD टॉपिक पे, मेरे PhD के रिसर्च एरिया पे आई हैव पब्लिश्ड 7 पेटेंट है मेरे उस पे, वेयर वी हैव डिवाइज समथिंग एज ए ह्यूमन लर्नर एंड ह्यूमन टीचर, हाउ फजी लॉजिक कैन बी यूज्ड एंड ऑल. सो वो वहां पे लर्निंग साइकोलॉजी व्हेन आई हैव स्टडीड there I have realized those who are the students of B.Ed वगैरह जिन्होंने किया होगा, B.Ed M.Ed लेसन प्लान लर्निंग मेथड्स वगैरह जहाँ पे सीखे होंगे, उन्होंने ये थ्योरी सुनी होगी कि no more than 7 new ideas can be assimilated by a learner in one shot. 45 मिनट का आप देखिए, स्कूल में लेक्चर का टाइम पीरियड क्या रहता है? उनका पीरियड का टाइम रहता है 30 मिनट 35 मिनट.
वेयर एज हायर एजुकेशन में अपने आप पे अपन ने 1 घंटे का लेक्चर रखा है, बिकॉज वी कंसिडर दैट द लर्नर इज मैच्योर्ड एंड ही इज मोटिवेटेड. बच्चा स्कूल लेवल से तो 10वीं क्लास तक के जो सीख रहा है, उसमें 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में हायर स्कूल में मीन्स व्हेन ही गोस टू हाई स्कूल, वहां पे पीरियड का टाइम हो जाता है 45 मिनट. जूनियर कॉलेज में जब आता है वहां पे 1 घंटा, सीनियर कॉलेज में आता है यहाँ पे 1 घंटा. यू सी द ड्यूरेशन. अर्ली एज में इट इज जस्ट 30 to 35 मिनट्स. उसमें भी लैंग्वेज के लिए 35 मिनट्स रहता है, मैथमेटिक्स के लिए 35 मिनट्स रहता है, अदरवाइज बाकी सब सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट्स का ड्यूरेशन है. क्यों? कि पहले 20 मिनट में ही वो सीख रहा है, आखिरी के 10 मिनट में आपको रिवाइज करना है. एंड यू हैव टू सी दैट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग टू ओनली मैक्सिमम 7 न्यू आइडियाज. 3 या 4 आइडिया अगर आप एक लेक्चर में देते हो 30 मिनट के, दैट विल बी डेफिनेटली अंडरस्टूड बाय एवरीवन. सो ऐसा ही कोर्स आउटकम में है. ए कोर्स शुड हैव ए मैनेजेबल नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स, टिपिकली बिटवीन 5 to 8, to ensure depth of learning without overwhelming learners. So ऑप्टिमम, मैंने मेरे शुरुआत में 8 to 10 बोला है. 8 to 10 इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी लेवल. जब पीजी के टीचर, पीजी के स्टूडेंट को आप पढ़ाते हो तो वहाँ पे 10 भी आउटकम रहेंगे तो चलेगा, लेकिन यूजी लेवल पे माई एक्सपीरियंस इज 7 आउटकम, दे आर द ऑप्टिमम. कोई भी सब्जेक्ट के लिए लर्निंग आउटकम आप 7 दिखाइए एट द मोस्ट ऑप्टिमम. और वो 7 आउटकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपके यूनिट को कंटेंट डिसाइड. हाउ मेनी लर्निंग आउटकम? 5 to 8. 5 बेस्ट, 7 ऑप्टिमम, 8 ओके, उसके बाहर नहीं जाइए प्लीज. हाउ शुड एन इंस्ट्रक्टर बिगिन स्ट्रक्चरिंग देयर कोर्स इनटू मॉड्यूल्स और वीक्स? यस, अभी तो कैसा है, अपन ने पूरे यूनिट बना दिए इसको मॉड्यूल्स. स्टार्ट बाय मैपिंग आउट द मेन टॉपिक्स ऑफ स्किल टू बी कवर्ड, अलाइनिंग देम विद द लर्निंग आउटकम्स, and then dividing these topics into logical manageable segments or modules. अपने यहाँ पे अमरावती यूनिवर्सिटी सिस्टम में if we are having a subject of 5 units, 5 units का सब्जेक्ट अगर है, best to have 5 learning outcome, और हर एक यूनिट को हर एक लर्निंग आउटकम के साथ आप मैप कर दो. इफ यू आर हैविंग इन इंजीनियरिंग वी आर हैविंग 6 यूनिट्स, तो 6 यूनिट है तो लर्निंग आउटकम भी आप 6 कर दीजिए या ज्यादा से ज्यादा 7 कर. सो स्टार्ट बाय मैपिंग आउट द मेन टॉपिक्स ऑफ स्किल टू बी कवर्ड, अलाइंग देम विद द लर्निंग आउटकम्स, एंड देन डिवाइडिंग दिस टॉपिक्स इनटू लॉजिकल मैनेजेबल सेगमेंट्स और मॉड्यूल्स, व्हाट वी कॉल देम एज यूनिट्स. उसके साथ साथ आप हर एक यूनिट को, जैसे ही आपने वो यूनिट के अंदर टॉपिक्स डाले, उस पे से आपको ध्यान में आएगा कि इसको 5 घंटे में कवर कर सकते, 6 घंटे में कवर कर सकते, या 7 घंटे में कर सकते, या 8 घंटे में. मैक्सिमम यूनिट टू बी कवर्ड, टाइम ड्यूरेशन शुड नॉट बी मोर देन 8 hours. एक यूनिट 8 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए. सो दैट इफ यू आर हैविंग 6 यूनिट्स देन 48 hours, and if you are having 5 units, 45, 5 से 8 5 40, 40 hours में कंप्लीट हो जाएगा. What's a key consideration in deciding the length of each module or week? Consider the complexity of the content. That's what I said. उसको कितने घंटे देंगे आप? The estimated time learner will need to engage with materials and complete assignments, and the overall pacing to keep learners engaged without overwhelming them. What we are considering here is that theory learning should be done. अभी अपने यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कंसेप्ट ऐसा है कि सर मैं क्लास में बता दे रहा हूँ, वो उसको समझ में आया कि नहीं आएगा, एग्जामिनेशन के टाइम में तो वो समझ ही लेगा. ऐसा लर्नर का भी कंसेप्ट रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है, और टीचर का भी रहता है कि सर बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं रहते हैं, वो सिर्फ लिख लेते हैं, वो देख लेते हैं, इसकी जरूरत दे दो, ऑल दैट. एंड व्हाट दे डू at the time of preparation for examination, yes, then they come up with all difficulties.
इन माई फर्दर लेक्चर्स, अभी आगे के सेशन में मैं बताऊंगा आपको कि हाउ टू कीप द लर्नर इंगेज्ड. Unless I keep curiosity alive, then the audience will not be attracted. See, don't take it otherwise, but why I made my course question based? क्योंकि आपके दिमाग में अभी भी एज ए पार्टिसिपेंट यू हैव के अरे आगे कौन सा क्वेश्चन डालने वाले हैं सर, एंड आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन चंक बाय चंक, छोटा छोटा एक बाइट बाय बाइट आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई की कंसिडरेशन इन डिसाइडिंग द लेंथ ऑफ ईच मॉड्यूल. आपके ध्यान में आएगा कि अरे हाँ यार ये डिफिकल्टी तो मुझे भी आती है, मैं जब कोर्स कंटेंट डिसाइड करता हूँ तो कहाँ पे कितना रखना चाहिए, कैसे मटेरियल रखना चाहिए. तो कंसिडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंटेंट. The estimated and time learner will need to engage with materials and complete assignments, and the overall pacing to keep learner engaged without overwhelming them. आपको engage रखने के लिए at each end I am giving you something and then giving some example, and then I am keeping your curiosity alive. आगे कौन सा क्वेश्चन आएगा, एंड इंटरमीडिएटली आई एम टेलिंग यू कि देखिए मैं आगे के सेशन में आपको ये बताने वाला हूँ, आपको मैं ये टूल भी बताने वाला हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर टूल आप यूज कर सकते हैं फॉर दिस. सो दोज हु आर नॉट नोइंग दे विल बी क्यूरियस कि नहीं यार आपका सर का लेक्चर अपन पूरा कंप्लीट करते हैं. एज ए टीचर प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी शुड बी ए गुड एक्टर, गुड परफॉर्मर, एंड वी शुड कीप द क्यूरियसिटी ऑफ द लर्नर ऑलवेज ऑन. ऑनलाइन लर्निंग में कीपिंग द क्यूरियसिटी ऑफ द लर्नर इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्या बोलना चाहिए डिफिकल्ट. क्योंकि मैं अभी यहाँ टॉक दे रहा हूं आपको, नथिंग इज इन माई कंट्रोल, आई एम सिंपली स्पीकिंग एंड एक्सप्लेनिंग. whether these 88 participants are physically listening it or not I don't know. बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने स्विच ऑन करके वो मोबाइल अपना इधर साइड में रख के अपना टीवी देख रहे हैं, या फिर सब्जी खरीद रहे हैं, या मार्केट में घूम रहे हैं. यस बट सर आई हैव अटेंडेड, आई एम नॉट हैविंग एनी चेक. वी एज ए ऑनलाइन टीचर वी शुड बी लाइक ए गारुडी असते ना मदारी. वो देखिए मदारी जब अपना काम शुरू करता है ना तो वो एक नेवले को और सांप को बाहर निकाल के दिखाता है और आखिर तक अपने को इंगेज रखता है कि मैं आखिर में आपको इनकी नेवले और सांप की लड़ाई दिखाऊंगा. बचपन से आज तक के मैंने ऑलमोस्ट 50 एक तो मदारी के खेल देखे होंगे, बट वो 50 भी मदारी के खेल में मैंने एक भी बार वो मदारी को सांप से नेवले की लड़ाई करते हुए नहीं देखा है. वो क्या है आखिरी में बराबर ऐसा थोड़ा सा टाइम 45 मिनट तक के वो सबको इंगेज कर लेता है, या 30 मिनट 15-20 मिनट उसने उसके चंदा वंदा वसूल कर लिया, क्या देन अरे यार इसने मुझे काट लिया, ये कर लिया, वो करके वो वाइंड अप. As a teacher, we should be smart enough to keep our audience attracted. So, without overwhelming the learner. How can modules or weeks be organized to enhance learning? वो ultimate aim is that the learner should learn. Organize modules to build upon each other. Known से unknown पे जाइए आप, पहले यूनिट से उसको सेकंड यूनिट में ले जाइए, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, फिफ्थ से सिक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 यूनिट पहले पढ़ा दिया तो भी चलता. नो, ऑर्गेनाइज मॉड्यूल टू बिल्ड अपॉन ईच अदर, स्टार्टिंग फ्रॉम फाउंडेशनल कंसेप्ट्स एंड प्रोग्रेसिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स, इनकॉर्पोरेटिंग रिवीजन एंड रिफ्लेक्शन पीरियड्स. उसको रिफ्लेक्ट करते आना चाहिए, उसको ये समझ में आना चाहिए अरे हाँ यार यूनिट नंबर 1 में अपने को ये बैकग्राउंड बताया था सर ने, उसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन अभी ये 6 यूनिट में आ रहा है. सो दैट कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ हाउ टू आउटलाइन द कंटेंट टू कवर ऑल लर्निंग ऑब्जेक्ट. आउटलाइनिंग द कंटेंट फॉर ए कोर्स ऑन वेब डेवलपमेंट, एन आउटलाइन माइट स्टार्ट विद HTML बेसिक्स, CSS styling, JavaScript fundamentals, each module including lectures, practice exercise, and a project that aligns with specific learning outcome. That's what I said. एक वेब डेवलपमेंट का अगर अपने को कोर्स करना है which will be around full fledged कोर्स है 48 सेशन का,
और थ्री क्रेडिट उसके थ्योरी के है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है, तो टोटल 4 क्रेडिट्स। तो 4 क्रेडिट के कोर्स में आप उसको HTML बेसिक से कैस्केडिंग स्टाइल शीट का स्टाइलिंग कैसे करना, बाद में जावा स्क्रिप्ट द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज वो उसको यूज़ करके वेब डेवलपमेंट कैसे करना। तो ये 3 चीज़ें अगर आपने क्लियर कट 6 मॉड्यूल में डिस्ट्रीब्यूट कर दी अलॉन्ग विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड एट द एंड एक टर्म प्रोजेक्ट, so that is the outline. Depending upon you are the expert in that subject. देखिए, as a teacher you are in expert in that subject. So as a learner, when you learn that subject, you put yourself in the shoes of the learner. और आपने एज ए लर्नर वो सब्जेक्ट जब सीखा, तो एज ए टीचर ट्राई टू रिकॉल व्हाट वेयर योर एक्सपेक्टेशन, और आपको वहां पे कहाँ पे कुछ डाउट हुआ क्या, अरे यार ये यहाँ चीज पढ़ाई नहीं सुने, डायरेक्ट प्रैक्टिकल दे दिया। तो keeping yourself both in the shoes of a teacher and a course designer, you design the outline, और वो आउटलाइन के हिसाब से फिर उसके अंदर आप कंटेंट डालिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें आपको इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि जब आप एक असाइनमेंट करोगे अभी या कल परसों, जब भी दैट असाइनमेंट आई एम गोइंग टू लीव इट टू यू, बट वो जब आप असाइनमेंट करोगे, सो यू विल कम टू नो कि यार मुझे ये कितने घंटे का कोर्स करना है, बनाना है, उसके अंदर मेरे कोर्स आउटकम क्या रहेंगे, उसके अंदर फिर कंटेंट क्या रहेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रिपेयर द आउटलाइन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग ए वैरायटी ऑफ कंटेंट टाइप्स इन ए कोर्स आउटलाइन। वैरायटी ऑफ कंटेंट टाइप्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कंटेंट टाइप्स, लाइक कंटेंट टाइप्स का मतलब ये होता है, आर यू ऑनलाइन कोर्स में आप वीडियो दिखाने वाले हो, क्या सिंपली PPT पढ़ के सुनाने वाले हो, क्या देर इज गोइंग टू बी इंटरैक्टिव एक्टिविटीज, यहाँ पे अपन चैटिंग करके कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, या कैटरिंग टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स। हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग अलग रहता है। कीप लर्नर्स इंगेज्ड, रीइंफोर्स लर्निंग थ्रू मल्टीपल मोड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक ही पर्टिकुलर टेक्निकल एग्जांपल देने के साथ आपने उसको रियल लाइफ एग्जांपल दिखाया, या फिर कोई सिमुलेटेड वर्जन दिखाया, या फिर उसका पैरेलल सिमिलर बायोलॉजिकल एग्जांपल दिखाया। सो टिपिकली आई जस्ट टेल यू एक सिंपल एग्जांपल। व्हेन आई start teaching my subject PG students, so I usually teach the subject on computer vision, how to make the computer to see like a human being। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एरिया है कंप्यूटर विजन, हाउ टू मेक कंप्यूटर विजुअलाइज द थिंग्स, इमेजेस, ये पूरा कैमरे के थ्रू लेके। सो आई ऑलवेज स्टार्ट माई लेक्चर विद व्हाई वी हैव 2 eyes बायोलॉजिकली, क्योंकि कंप्यूटर विजन में उसको भी देखना है। तो कंप्यूटर विजन में अगर हमने एक कैमरे से फोटो लिया तो वो एक फोटो आएगी, दूसरे कैमरे से फोटो लिया तो भी एक फोटो आएगी, मतलब दोनों कैमरे के फोटो अगर हमने कंबाइन किए तो वी विल हैव 2 फोटोग्राफ्स। कंसिडर ईच वन ऑफ योर आई इज 1 कैमरा। एक आंख बंद करो, दूसरी आंख से आप देखो, आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही, एक स्लाइड। राइट आई बंद कर दीजिए, लेफ्ट आई ओपन कीजिए एंड देन सी द स्क्रीन, यू विल फाइंड सेम स्क्रीन। दोनों आंखें खोलने के बाद में जब देख रहे हैं हम, तो भी वही स्क्रीन दिखाई दे रहा है। राइट आई से देखा तो भी सेम स्क्रीन, लेफ्ट आई अलोन से देखा तो भी सेम स्क्रीन, दोनों आंखें खोल के भी देखा तो सेम स्क्रीन। then why nature or God has exaggerated by giving us 2 eyes? देखिए, बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड अल्गोरिथम है ये कंप्यूटर विजन का जो अल्गोरिथम है, इट इज नोन एज बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड अल्गोरिथम। क्वेश्चन इज दैट ये कंटेंट टाइप कैसे रखेंगे आप, वीडियोस रहेंगे, रीडिंग्स रहेंगे, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज रहेंगे, और क्या रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, अभी आपके दिमाग में ये होगा कि अरे हाँ यार ये तो है, उसमें भी मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ। नॉट ओनली दैट, we have nature has exaggerated by giving us 2 eyes, and those 2 eyes are right at the front of the face. They are at front of the face. How better it could be एक आंख अपनी सामने रहती और एक पीछे रहती,
तो अपने को गाड़ी चलाते वक्त सामने का भी दिखाई देता था, तो रियर मिरर में देखने की जरूरत नहीं, पीछे का भी दिखाई देता था. वेल, यू कंसिडर दिस वे, आवर 2 ears आर 180 डिग्री अपार्ट. एक राईट इयर, उजवा कान, आणि लेफ्ट इयर, they are 180 डिग्री अपार्ट, where our eyes are on the same plane. नेचर ने ऐसा क्यों किया? नाउ लुक एट योर नोज. नोज के दोनों नॉस्ट्रिल्स एक के बाजू में एक पे कर दिए, एंड देन योर माउथ. नाउ इफ यू लुक एट this is the best shape. I always say, and which is very true, that if you want to see the best creation of God in this world, अगर आपको ईश्वर की बेस्ट क्रिएटिविटी देखना है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर. आईने के सामने खड़े रह के देखिए, आपको बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड दिखाई देगा. वी आर द बेस्ट क्रिएशन. आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करके, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेंगे, देन यू विल रियलाइज कि यार कितना सारा एम्बेडेड सिस्टम अपने ये एक दिमाग में है. दे आर ऑल बायोलॉजिकली, ये जो जितना भी सुपर कंप्यूटिंग वगैरह बनाए, दे आर ऑल बायोलॉजिक इंस्पायर्ड. कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, कि कंप्यूटर विजन में आई स्टार्ट विद दैट, कि भाई ये दोनों आंखें दी. दो आंखें क्यों दिए? मैंने अगर दो कैमरे लगा दिए और दोनों कैमरे से फोटो लिया, तो दोनों कैमरे में मुझे अलग अलग एंगल से फोटो आएगी, बट देन दे विल बी डिफरेंट फोटोग्राफ्स ऑल टुगेदर. Whereas when I am looking by my two eyes, I am getting the same image. But उसके अंदर one most important point is that both the eyes taken together is providing you a stereo vision. ये दो कान अपने 180 डिग्री अपार्ट इसलिए है कि we get stereo audible things. स्टीरियो बोलते ना, स्टीरियो, मोनो स्टीरियो. स्टीरियो है, दोनों कान जब डिफरेंट एंगल से सुनते हैं तो अपने को उसका स्टीरियो इफेक्ट आता है, उसकी डेप्थ मालूम पड़ती है. आपको समझ में आता है कि ये आवाज किधर से आ रही है, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से. लाइकवाइज व्हेन यू हैव टू आईज, इट गिव्स यू द डेप्थ ऑफ द थिंग. गाड़ी चलाते वक्त अगर आपने, डोंट एक्सपेरिमेंट विद दैट, जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जांपल. गाड़ी चलाते वक्त आप अगर ओवरटेक कर रहे हो, उस वक्त आप एक आंख बंद कर लो, आई विल टेल यू डेफिनेटली देयर विल बी एन एक्सीडेंट, क्योंकि आपकी डेप्थ चली जाती. व्हाइल यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम स्टेयरकेसेस, आप नीचे आते हो, एक आंख बंद करके आप स्टेयरकेस उतरने की कोशिश करो, यू विल फॉल डाउन, बिकॉज आपकी स्टीरियो विजन चला जाता है. जो डेप्थ है, that depth is because of two eyes. Same thing we want to achieve by having two cameras. Stereo vision अगर हमको लाना है तो this is how we can generate different content types. ये अपना ऑनलाइन कोर्स रहेगा, वो वीडियो बेस्ड भी रहेगा, उसमें रीडिंग असाइनमेंट रहेंगे. हम कैंडिडेट को यही रीडिंग करने लगाएंगे बाय अपने पीपीटी से, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज रहेंगी, ऑल दैट. So what is the importance of including variety of content types in a course outline? Because we can have this reinforced learning and all. How can quiz be used to enhance engagements? Yes. Engagement रखने के लिए, curiosity रखने के लिए, जैसे अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन होगा. Now I am coming to that point कि engagement strategies क्या रहेगी. What will be our engagement strategy? Engagement strategies will be through quizzes. They can provide immediate feedback, help learners assess their understanding, reinforce the key concept, and motivate them to engage with material more deeply. I normally have in my online courses, अगर आप वहाँ Udemy के कोर्स पे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, I have online quizzes after every session. जैसी सेशन खत्म होता है तो इमीडिएटली ऑनलाइन क्विजेज है, और वो ऑनलाइन क्विज ऐसा है कि इट इज नॉट टेस्टिंग द नॉलेज, रादर आपको कितना याद रहा या नहीं, आपका अंडरस्टैंडिंग कितना हुआ, दैट शुड बी आवर क्राइटेरिया, rather than उसको कितने मार्क्स मिलते हैं. सो व्हाट वी डू, वी शो ए क्विज, उसके 4 ऑप्शन है, और थोड़ी देर के बाद में हम उसका करेक्ट आंसर भी बता देते हैं उसको, और बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई दिस आंसर इज करेक्ट एंड व्हाई अदर ऑप्शंस आर
not correct. So automatically understanding हो जाता है. तो quizzes they can be engaging also. Discussion, if you are having, अभी यहाँ पे in this session I am not because of short of time I have indicated कि सर आप lecture दे दीजिए, it is recorded one and student को जब भी लगेगा तो they can go through it and then they can recall the things and all. That is the reason we are not having it interactive. Otherwise it should be a Zoom kind of meeting wherein everyone is speaking. वो chaos हो जाएगा फिर. So discussions encourage peer interaction. There can be a separate discussion session wherein all the students, participants in a online learning course, they can discuss with each other. Typically आपने देखा होगा YouTube पे कुछ channels are available who are training the students on net and set. Net set के लिए जो training modules चलते हैं YouTube पे, they are having this kind of discussion sessions. They explain something and then they have 1 hour session for discussion, and that is very productive. Discussion encourage peer interaction, allow for exchange of ideas, deepen the understanding through debate and reflection, and build a community of learners. So collaborative learning is always good. How can interactive elements be incorporated? This is most important. Interactive element अपने ऑनलाइन कोर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे? मल्टीमीडिया कंटेंट डालिए आप. You can put simulation there. Gamification of learning activities is a hot area of research wherein जो भी एक्टिविटी करते हैं आप उसमें रोल प्ले करवाइए आप फिजिकली. Nowadays virtual reality and augmented reality has provided so much of computing tools that we can have simulation, gamified learning activities and interactive assignments, all designed to actively involve learners in the learning process. So these are the things which can make our learning interactive. Why is feedback important in online learning course? Because it provides learner also with insights into their progress, clarifies misunderstandings, offers guidance for improvement, and supports learners' motivation and self-regulation. So how can instructor facilitate effective interaction in an online course? That depends on involvement of the instructor. By being present and active in discussion. ऐसा नहीं कि आपने ऑनलाइन कुछ एआई यूज करके एक डिस्कशन फोरम डिजाइन कर दिया और वहां पे एक चैटबॉट डाल दिया और व्हेन स्टूडेंट्स आर इंटरेक्टिंग दैट चैटबॉट इज गिविंग आंसर टू देम वो मैकेनाइज वे से. नो, एज ए instructor I must get engaged with the student during their discussion. So by being present and active in discussion, providing timely and constructive feedback, encouraging the peer review and collaboration, and using technology to facilitate synchronous and asynchronous interactions. So this way you can make effective interaction in your online course. Now, how to develop the course content? That is the main. What time it is? I think 1 hour 8:45. 1.5 hours. Can we have a break of just 5 minutes? Someone can speak. Am I audible? Yes, sir. Yes, You are yes. good. Can we have? Yes, sir. Sir, Yes, can we okay, have sure, sir. just 5-10 minutes break? Yes, sir. Okay. Yes, sir. 7:15 we started. I have just given you the background. Now it will be main. I want that you have a break. Yes, sir. Come up fresh so that यहाँ पे भी कुछ मेरे 30 slides are there. How many slides we have just now finished? We have finished 30 slides. 30 slides finish कर चुके हैं. Total number of slides which I had in this material is 60 plus होगी ये बीच में की स्लाइड मिला के. So 30 slides we have already finished. और ये developing the course content is the most important for you as well as for me, so that here at least as an outcome आप सब लोगों को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार I can also develop an online course. बस that is my point. So let us have a break of it is 8:40. We will meet at 8:50. 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं. Okay? Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you. So nice. 10 मिनिटाचा ब्रेक.
Friends, we will wait for a couple of time. I think our resource person is disconnected. Yes, sir. I think a resource person have taken 10-minute break. Yes, sir. We will wait for sir. Said we will continue from 8:50.
Hello. 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 Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And what Yes, about sir, my you are screen? audible. My screen? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible? Yes, Yes, sir. sir. That MOOCs and Yes, sir. SWAYAM. Yes, sir. Slides Yes, are sir. not moving. Hello. Because I have not started that slideshow. Fine, sir. Now, MOOCs and SWAYAM, developing course content. Yes, sir. So, Yes, sir. now let us move. Okay then. So, briefly, I will Yes, sir. just tell you how MOOCs and SWAYAM developing course content. But before that, I would like to show you something else. Now, MOOCs and SWAYAM developing course content. Yes, sir. Yes, sir. Now, okay. Yes, sir. Just a minute. Just. Is this window visible? Yes, sir. Yes, sir. sir. What do you read this? A quick start guide to generic algorithms in Python. Yes, sir. Yes, Is sir. visible to you? Yeah. Yes, sir. Yes. Now this is one of my popular courses which I am going to show you as a demo so that you also get motivated कि yes अगर अली सर कर सकते हैं तो फिर कोई भी कर सकता. It is that way. A quick start guide to generic algorithm. That area was of my interest. That is the reason I have developed that course on, and it is you can see it has got rating as 4 star. There are 175 students who have attended this course, and it was last updated May 2022. After that,
I got busy somewhere else. So I'll just show you the preview of this course. What you learn, that objectives, introduction, module and all that. So your voice is not audible. Audible, sir. Not audible. Say, I am not speaking. It is that you are simply watching the slides, isn't it? Genetic algorithm slide. Yes, Okay, sir. Yes, sir. Is it visible to you, that genetic algorithm Yes, sir. technology? Yes, sir. This Yes, is sir. this is some sample of the course which I am just going to indicate to you. Voice may not be audible to you, so I am just closing it. It was just for an example. Okay, this is how you can have a course on that. Likewise, just for example, the another course is science. This is another course which is available, which is useful to all the researchers. Here I have 358 students who have registered and they have completed this course of 1 hour duration. Course preview, just I will show you how a 60 minutes guide depending upon the audience, and that one was genetic algorithm, quick start guide. So, just this way you can introduce your video also, you can audio also, and so on. So, as such, I do not want that you should at this moment go through it. It should be simply seen as a sample, so that when you are developing your own course, this is how you can keep the things in mind. Well, so we will come back to our SWAM. Now, my SWAM, MOOCs and SWAM developing course content is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now, Yes. we will start from here. Yeah. So, developing course content. Yes, Now, with reference to developing, we are basically interested in creating engaging content. How to create engaging content so that the learner will be always curious about what next is going to be told, and then what way
you have to present. So what type of contents can make an online course engaging? Engaging contents include videos, lectures, video lectures, interactive sessions, readings. You can give some reading assignments online, and it should be such a manner that highlighted notes can be asked to the learner to be skimmed through, and then in between you can interact with him. Presenting the case studies, infographics, and simulations that cater to different learning preferences. So that is one. Then how can PowerPoint be used to create course content? Yes, mainly my concern will be with reference to PowerPoint, and another free tool available, which is a subscription based model also available, is Canva. Canva has become very popular nowadays for online course content. So how can PowerPoint be used to create course content? Yes, visually appealing presentation with diagram, charts, bullet points to explain concept clearly and succinctly. I am using it only for text purposes here, but that PowerPoint is the best. You can use animation also there for making the PowerPoint presentation more attractive and more engaging. What advantages does Canva offer for online course? Canva, most popular nowadays because of not only online teaching learning, but for other purposes also. Canva has become popular because of its easy accessibility. Its subscription model is not monthly based. You can subscribe for Canva just for 24 hours, 12 hours, and they will charge you. For example, one of my slides I prepared somewhere for other purposes. So I took Canva for 24 hours, for which they charged me 180 rupees. 180 रुपए में आपको कैनवा की फुल फीचर फैसिलिटीज मिलती है 24 घंटे के लिए. और उसका एडवांटेज ये है कि आजकल आपने इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी. रील्स दे आर ऑफ 30 मिनट 30 सेकेंड्स और 1 मिनट. लाइकवाइज शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब पे आजकल शॉर्ट्स आते हैं, वो 30 सेकंड से 1 मिनट के रहते हैं. वेयर आर दे क्रिएटेड? दोज वीडियोज आर क्रिएटेड बाय यूजिंग कैनवा. और उसका एडवांटेज ऐसा है कि वो 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए बनाना है आपको, और यू वांट टू हैव मल्टीपल सच वीडियोज क्रिएटेड. कैनवा इज द बेस्ट सॉल्यूशन. जस्ट नाउ आई हैव इंडिकेटेड टू यू, मैंने जो कैनवा यूज किया था वो किस लिए यूज किया था. मैंने जस्ट आपको बताया है कि पिछले सेशन में आई टोल्ड यू कि आई हैव क्रिएटेड ए कोर्स ऑन frequently asked questions in C programming 100. So 100 frequently asked questions के वीडियो जनरेट करने के लिए I have utilized this PowerPoint as well as Canva, so that आपके 100 slides, 1 slide per question as a video will be created just in 2 hours. वो मेरे जैसा स्लो लर्नर है तो 2 घंटे. आपके जैसे इंटेलिजेंट लर्नर रहेंगे, वो आर टेक सेवी और कंप्यूटर सेवी, और आज की नई जनरेशन जो है दे आर फास्टर, तो उनको तो आधा घंटा नहीं लगेगा. तो यू कैन क्रिएट 100 वीडियो स्लाइड्स जस्ट बाय यूजिंग कैनवा. सो दिस इज अनदर वन. Adobe Creative Suite beneficial for course content? Yes, it is there, but I have not used it. But this is also one of the popular suites. Adobe Creative Suite provides professional grade tools for graphic design, video editing, and web development, enabling the creation of high quality multimedia content. Yes, but इसका learning curve मेरे हिसाब से, मुझे जो लगा है ना, I started interacting with Adobe Creative Suite for my purpose. मुझे लगा कि यहाँ पे लर्निंग कर्व थोड़ा सा स्टीप है. Canva is easier. PowerPoint I am very comfortable because we have been using it since beginning. So PowerPoint and Canva मिला के it can be a very good combination. Why are video lectures important in online courses? Video lectures can simulate a classroom experience. Video lectures का एडवांटेज ये है, जैसे जस्ट नाउ मैंने आपको 60 मिनट्स गाइड बताया,
वहां पे आपने मेरा पिक्चर देखा होगा, वो दैट इज वीडियो which has been recorded and that has been presented there. So though at this moment I have switched off my video because of internet bandwidth. Otherwise, when you are looking at a person who is speaking, it gives you a one-to-one touch. Heart to heart जो connection रहता है, that is more in the classroom. If classroom live experience आपको simulate करना है, so it is better to have video lectures. It provides visual and auditory learning and allow learners to engage with content at their own pace. How can interactive session enhance learner engagement? Obviously, क्योंकि आप उसको participate करवा रहे हो, तो it will allow real-time feedback and it can include discussion, live question answer and hands-on activities. What role do reading plays in online learning? Reading भी रखते हैं, reading supplement video lectures and interactive sessions with in-depth analysis, theoretical background and extended examples. How can instructors ensure their content cater to diverse learning styles? Yes, content development करते टाइम में आपको ये चीज याद रखनी है कि by incorporating a mix of content types, including visual, auditory, reading, writing and kinesthetics, मीन्स वहां पे आप यूजर को भी कोई एक्टिविटी करने के लिए कंपेल करते हो, those activities to address the varied preferences of learners. Maybe you provide a text box और या बटन प्रोवाइड करते हो और आप उसको यूजर को बोलते हो कि आप इसको क्लिक कीजिए. सपोज at this moment I find that there are 73 participants and I want to test whether all these 73 participants are active at this moment or not. Means I am speaking, I am actively involved in that, but how many of these 73 participants are physically, यहाँ पे तो सब मुझे उनके नाम वगैरह सब दिखाई दे रहे हैं, they are, but how many of them are physically present? उसको टेस्ट करने के लिए I may have a button here and I ask each one of you to mark your attendance so that you click on that button. So, and I keep the clicking of button only on for 2 seconds or 3 seconds or 5 seconds. और वो 5 सेकंड के दरमियान में जो लोगों का रिस्पांस आ गया, दैट मीन्स आई नो कि आउट ऑफ दिस 72, अरे यार फिजिकली 12 ही लोग थे, 60 लोग तो एंजॉय कर रहे थे टीवी. इट्स ओके. So by incorporating a mix of content types, including visual, auditory, reading, writing, and kinesthetics activity to address the varied preference of learners, it can be. What are some tips for creating visually appealing content? Visually appealing content के लिए themes should be consistent. अभी आप मेरे slides देख रहे हो, themes are consistent, colors are same, cluttered slides नहीं चाहिए. आप मेरे screen पे देखिए, the question and its answer, they are very clear, font wise, not more than 3-4 lines per slide. ज्यादा क्लटरिंग मत करो. और दूसरी चीज ऐसी है, मैंने बहुत बार प्रेजेंटेशन में ऑब्जर्व किया है, यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड एंड मे बी सम ऑफ यू हैव डन दैट मिस्टेक आल्सो. नॉर्मली क्या होता है, व्हाई योर स्लाइड्स आर नॉट एंगेजिंग द लर्नर, समथिंग डिफरेंट इज शोन ऑन द स्क्रीन than what the speaker is speaking. When I am focusing on this screen, this slide, the question written here is, what are some tips for creating visually appealing content? And to that answer presented is, use consistent themes and colors, avoid cluttered slides, include relevant images and infographics, and ensure text is readable. See, I am though reading the same material available on screen, but I must focus to this point only. I am giving the example that during my 1.5 hour or 2 hour session, you must have observed that I have kept the consistent themes, colors. I have avoided cluttered slides, relevant images and infographics if at all I wanted to have an image, and ensure text is readable. बारीक बारीक फॉन्ट लेके उसको क्लटर करके क्या है, उसको पढ़ने में अगर तकलीफ हुई तो वो इमीडिएटली बंद कर देगा. So it is better
what you want to explain, you explain it by your auditory speech rather than writing it here and reading it. Okay, when I say use consistent themes and colors, I should now explain it by my speech. कि देखिए ये एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है आपको मेरे स्लाइड का, जो मैं एग्जाम्पल करके बोल रहा हूं आपको, वो स्लाइड पे डाल के उसको रीडिंग करेंगे तो इट विल नॉट मेक स्लाइड्स और योर वीडियो इफेक्टिव. Some tips for creating visual appealing content is themes and color should be consistent. Cluttered slide, clutter में इसके ऊपर खूब सारी चीजें भर दो आप, ये भी वो भी वो भी वो भी, the user will not. ये I am not saying because I have created it, but I always keep my things clear this way. मेरी स्लाइड अगर आप देखेंगे, जितने भी मेरे प्रेजेंटेशन है, I keep it true that they are not having more than 7-8 sentences at the most, और वो भी bulleted points wise, maximum 7 points at the most. So remember these tips. Include relevant images. अगर आपको लगता है कि 50 sentences मुझे बोलना है और वो मुझे यहाँ पे स्लाइड पे भी दिखाना है, best idea is to have all those 50 statements on 50 different slides, one statement per slide, and make it animated one by one when you are reading it. That will make more effective. आपको कोई restriction नहीं है number of slides पे, but how intelligently and cleverly you use those things depends on your expertise. So that is to be developed. Why is the choice of content creation tool is important? कौन सा content creation tool आप use करते हो, ये इसलिए important है कि the right tools can streamline the creation process. आपको जो content create करना है, वो creation process को streamline करने के लिए the tool which you are very comfortable and the tool is very right. Don't consider that because you know, वो saying है ना कि don't use hammer for everything, क्योंकि you know how to use hammer. हथौड़ा कैसे चलाना ये अपने को आता है, इसके लिए हर जगह पर हथौड़ा यूज करना चाहिए अपन ने. That cannot be the solution. Right tools can streamline the स्क्रू ड्राइवर चाहिए, अगर आपको स्क्रू को निकालना है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए, स्क्रू को टाइट करना है तो स्क्रू ड्राइवर चाहिए. Don't use hammer there. It is that example. The right tools can streamline the creation process. They can enhance the quality of content and enable features that make learning interactive and engaging. If you feel that you are very comfortable with PowerPoint, तो उसके अंदर के जो जो tools available है, PowerPoint also has got lot many tools which are hardly utilized. वहाँ पे वीडियो कंटेंट क्रिएट करने का है, उसमें रिकॉर्डिंग करना है, उसको एडिटिंग करना है. All these features are very much available in मेरे वहाँ के जो आपको जो स्लाइड दिखाई दे रहे हैं Udemy पे, both of them are created by using PowerPoint. वो वीडियो भी जो है वो PowerPoint में क्रिएट किया हुआ है. So the right tools can streamline the creation process, enhance the quality of content, and enable features that make learning interactive and engaging. So tool select करना है आपको. What are some best practices for recording video lectures? अभी अल्टीमेटली आपने कंटेंट वगैरह जो भी डिसाइड कर लिया, अपने को वीडियो बनाना है और उसको रिकॉर्डिंग एंड वीडियो एडिटिंग करना है. सो व्हाट आर द बेस्ट टूल्स अवेलेबल? Ensure good lighting practices, good lighting, clear audio, a distraction-free background, and maintain eye contact with the camera to engage viewers. आप अगर आपका वीडियो आपके मोबाइल से भी लेते हो तो मोबाइल स्टैंड पे उसको लगा दीजिए and start video and then recording, and you see that your face, your screen, and what all things you are clubbing together, they are having good lighting, clear audio, a distraction free background, and maintain the eye contact with the camera to engage the viewers. So camera में अगर आप देख रहे हो तो it will be directly interacting with the eye to eye contact with the learner. So viewer को भी वो engage ही करेगा. So these are the best practices for recording video lectures. Instructors make their video lectures more engaging करने के लिए expressive,
using visuals and incorporating real life examples and breaking the lecture into shorter segments. देखिए वो 60 मिनट्स गाइड जो है वो इट इज ऐसा तो 60 मिनट्स का गाइड है, 1 ही घंटे का है वो, बट वो 1 घंटे में भी यू विल फाइंड दैट देयर आर 20 लेक्चर सेगमेंट्स है उसमें, वो 5-5 मिनट के, 4-4 मिनट के, 3 मिनट के, ऐसा है. सो दैट 60 मिनट्स का टोटल है. तो it is broken into a chunk of 3 to 4 minutes so that learner will also not be bored, because when you are providing online course, don't assume that अभी अपना ये जो सेशन चल रहा है वो तो अपने को टाइम कंस्टेंट होने की वजह से हमने उसको इस तरह किया है कि भाई 7 बजे से शुरू होगा, 9 बजे तक चलेगा या 9:30 बजे तक चलेगा, एट ए स्ट्रेच. हाउएवर ऑनलाइन कोर्स जो आप अपने लर्नर को दे रहे हो तो ही इज लर्निंग, तो उस वक्त it should be anytime anywhere learning. तो 60 मिनट का एक लेक्चर रखने की बजाय आप उसको 3-3, 4-4 मिनट के चंक में ब्रेक कीजिए. सिंगल पॉइंट वाइज अगर आपने किया, फॉर एग्जांपल मैं जो अभी आपको मे बी वो कोर्स अवेलेबल रहेगा तो आई विल मेक इट अवेलेबल टू यू आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर सम टाइम. यूडीमी पे रहता है तो वो टोकन देने के लिए बोलते हैं. आई विल just share those tokens with all the people through your Pixar के through, so that they will be available to you. एक आप कोर्स देख सकते हो कि भाई किस तरह से ये कोर्स बनाया गया है and how it is engaging. तो एक जो क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग का, that doesn't take more than 3 minutes. मैक्सिमम कहीं एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के साथ तो 6 मिनट तक के गया है वो. अदरवाइज इट शुड बी सिंपली क्वेश्चन, उसका आंसर और एग्जाम्पल, एंड दैट्स ऑल. सो into shorter segment, break the lectures into shorter segments, so that 3 मिनट का लेक्चर देखने के बाद में उसको लगता है ओके भाई अभी अली सर को अपन ने 3 मिनट सुन लिए, दैट्स इनफ, बाद में देखेंगे अपन, बाद में सो कल देखेंगे. तो that is how online courses should be made anytime anywhere to anyone. Anytime anywhere is the slogan. What is the role of editing in video production for online? Yes, अभी नॉर्मली क्या होता है, why I am in course content में don't expect that I am going to give you the content of a course. I am showing you how to create the video. अब ये editing in video production ये कहीं ना कहीं अपने को सीखना पड़ेगा. Don't be shy on learning these tools, because depending on other person for editing and all, वो थोड़ा सा personally I don't like it for the reason कि as a teacher आपको पता है व्हाट यू वांट टू टीच एंड इन व्हाट मैनर यू वांट टू टीच. तो आपको ये पता है कि मुझे यहाँ पे कौन सा पोर्शन एडिट करना चाहिए, कौन सा रखना चाहिए. ये ईच एंड एवरी डिटेल आप किसी प्रोफेशनल को दोगे वो करने के लिए, तो इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम एंड इट रिक्वायर्स कॉस्टिंग, उसको पैसा देना पड़ेगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका उसके साथ में उसको फी देने के साथ साथ जो टाइम वेस्ट होता है वो इनवैल्यूएबल है, वो रिकवर नहीं होता. दैट इज द रीजन आई प्रीफर कि भाई आई विल लर्न द टूल. थोड़ा वक्त लगेगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में, बट और इसका पावर पॉइंट का वीडियो एडिटिंग इज वेरी सिंपल. यानी 1-2 बार आपने ट्राई किया, यू विल फाइंड दैट रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो वेरी इजी एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो वेरी इजी. Editing enhances the quality of videos, allowing for the removal of mistakes. कहीं बोलते वक्त पॉज आ जाता है, अननेसेसरीली वो यूजर का टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, आप वो पॉज को आप वहां से एलिमिनेट कर सकते. तो बाय एडिटिंग द वीडियो यू कैन रिमूव द मिस्टेक्स. कुछ इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो, फिल्टरिंग इफेक्ट डाल सकते हो, नॉइज रिमूवल कर सकते हो, देन समथिंग इज अपीयरिंग. And incorporation of supplementary visuals or text, that is all can be used for editing in video production. How does Camtasia support video creation for online? Camtasia I used for some time, but then those who are comfortable with this is also very easy to use video editing and screen recording technique, making it suitable for creating instructional videos with annotation, animation and quizzes.
Camtasia का एडवांटेज ये है कि इट इज ओपन सोर्स एंड इट कैन बी यूटिलाइज, बट इट हैज इट्स ओन लर्निंग कर्व. पावर पॉइंट थोड़ा सा कमर्शियल है बट इजी टू लर्न. आई मूवी भी है एक पॉपुलर चॉइस फॉर बिगिनर्स है. एक आई मूवी है, इसका माइक्रोसॉफ्ट फॉलो का. Offers a range of template and effects and is ideal for creating high quality. I think it's not from iMovie is not from Microsoft, and ideal for creating high quality videos with minimal prior editing experience. Yeah, user friendly hai and easy for beginner. I have not tried it. Adobe Premiere Pro sometimes I tried, but I find again ये tool पे थोड़ा सा professionals के लिए, तो learning curve is little steep. Audio quality, use high quality microphone. अभी मैं जो माइक्रोफोन यूज कर रहा हूं, आप तो देखते होंगे कि इसमें माई वॉइस इज वेरी क्लियर. द सेम माइक्रोफोन आई यूज फॉर रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स. मेरे ऑनलाइन लेक्चर जो रिकॉर्डिंग होते हैं वो आई यूज दिस सेम माइक्रोफोन. गन काइंड ऑफ माइक्रोफोन, गन माइक्रोफोन विच इज फोकस्ड ऑन, डज नॉट कलेक्ट नॉइस फ्रॉम बैकग्राउंड. So it should be that way. Use a high quality microphone, reducing background noise, and post production audio editing can be minimized. And if at all you are doing that, it will improve the clarity and quality. That is required, in fact. So this kind of audio editing is also available under PowerPoint that you can utilize. How important is the video thumbnail for online courses? Yes, ये एक चीज है. What is the advantage of this? पहले तो हम देखते हैं what is the meaning of thumbnail. Thumbnail acts as a first impression, enticing learner to click and watch, and should be visually appealing and relevant to the content. ये thumbnail से advantage रहता है कि आपके पूरा 30 मिनट का अगर वीडियो है तो वेरियस प्लेसेस पे अगर आपने थंबनेल डाले तो वो वहां से रीस्टार्ट कर सकते, और द यूजर कैन डायरेक्टली जंप टू ऑन ए पर्टिकुलर थंबनेल. मतलब सपोज 30 मिनट्स का आपका वीडियो है और 25 मिनट के बाद में कौन सा टॉपिक आप वो करते हो, बता रहे हो, उसको डायरेक्टली वहां पे जंप करना है रादर देन गोइंग सीरियली. तो थंबनेल विल प्रोवाइड द एडवांटेज. तो इट इज बेटर. नाउअडेज जो ये आते हैं, इसका जो वीडियो एडिटर है इवन पावर पॉइंट का, it asks you, can would you like to have thumbnails? So you can indicate कि भाई यहाँ पे आप जब उसको टेस्ट करते हो, at the time of testing you can indicate कि I want thumbnail here, here. So after that those thumbnails will be placed in, and when the video is watched by the learner, वो thumbnail to thumbnail जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है. So this way thumbnails will be useful. Can animations be used in education videos? Yes, animation can be very well used. They can be used for explaining the complex concept in a simple and engaging way, adding variety and enhancing understanding through visual representation. What consideration should be made for video length in online courses? Yes. What should be the video length? Video should be concise yet comprehensive, typically ranging from 5 to 15 minutes to maintain learner engagement without overwhelming them. इसमें, though it has been suggested to have 5 to 15 minutes, I always prefer to be moderate to the tune of 7 minutes. 7 से 10 मिनट बहुत, और उससे कम अगर 5 मिनट से कम अगर आपका वीडियो रह सकता है जिसमें एक कंसेप्ट आप बता के उसको वीडियो को क्लोज कर सकते हो, पीपल विल अप्रिशिएट लाइक एनीथिंग. What type of assessments are effective in online courses? Basically quizzes, peer reviewed assignment. वो assignment उसको आप सबमिट करने लगाइए, उसको रिव्यू करने के बाद में असाइनमेंट वापस दे दीजिए. This we experimented with one of our online ने एक ये लिया था, ड्रिप का कोर्स लिया था. It was 15 days ड्रिप online course, doctoral research induction program, wherein the purpose was to, the outcome of that was, after completing that 15 days drip program, the participant or learner would be able to create a
review paper on his research topic. So there we had peer review assignment. उनको हमने जो भी assignment दिए थे, वो assignment they used to submit online, and after those assignments are submitted, they were peer reviewed by other members, and they were immediately referred back to them. And projects and simulation, यहाँ पे कौन सा हमारे वो ड्रिप के प्रोजेक्ट में, ड्रिप के उसमें असाइनमेंट था प्रोजेक्ट का, एंड दैट प्रोजेक्ट वाज ए डिलीवरेबल रिव्यू पेपर. उसमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वर 17 पार्टिसिपेंट, 17 पार्टिसिपेंट थे उसमें, जिसमें से आई रिमेंबर 5 ऑफ द पार्टिसिपेंट्स कुड पब्लिश देयर रिव्यू पेपर इन पीयर रिव्यू जर्नल. वहां पे रिक्वायरमेंट ये थी कि रिव्यूड जर्नल जो पेपर रहेगा दैट विल बी पब्लिश इन. सो पीयर रिव्यूड असाइनमेंट दे सकते हैं आप, प्रोजेक्ट दे सकते हैं, एंड सिमुलेशंस आर इफेक्टिव फॉर assessing understanding, application of knowledge and skills development. So this is for designing. How can Google Forms can be used for creating quizzes? ये तो आपको पता है. You can go to the Google Form, उसको quiz type में आप open कीजिए. It will ask you to give the questions and multiple choices, and then it will create, and बाद में आप उसको float कर दीजिए. It will do you easy creation of quizzes with automatic grading options, feedback for correct, incorrect answers, and a variety of questions. Right? Google Form, best one for quizzes. So here I have indicated you some of the tools which are used for content creation. What benefits do peer-reviewed assignment offer in online learning, which I just now told you? It encourages the critical thinking, provide learners with diverse feedback, and facilitate engagement learning with peers, enriching the learning experience. Projects, yes. Both of my courses which are available online, both of them are involving the project. 60 minutes guide में भी at the end of the quizzes, I have given them a project कि आप एक review paper लिखो. Likewise, which I am not going to evaluate, but then I have given them hint in what manner that review paper can be written and so on. Likewise, in genetic algorithm also, we have used there 3 case studies. If you go there, 8 queen problem hai, then knapsack problem hai, then one more is there. ऐसे 3 projects हमने वहाँ पे करवाए हैं, integrated into the online courses. Projects can be used to apply theoretical knowledge to real world problems, encouraging creativity, problem solving, and practical skills. What tools support the creation of interactive content in online courses? Quizlet करके एक tool available है for flashcard and learning games. स्वयं के अंदर भी आपको built-in tools मिलेंगे for interactive e-content, enhancing the engagement and understanding. स्वयं का प्लेटफॉर्म अगर आपको यूज करना है, सो द प्रोसेस इज दैट यू गो ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म, रजिस्टर योरसेल्फ एज एन इंस्ट्रक्टर और रजिस्टर योरसेल्फ एज ए कोर्स कंटेंट डिजाइनर. दे विल प्रोवाइड यू द टूल और प्लेटफॉर्म फॉर, एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करेंगे आपको, जहाँ पे आपको दे विल बी गाइडिंग हाउ टू क्रिएट योर ओन कोर्स, उसमें कंटेंट कैसे डालना है, क्विज कैसे. इट इज वेरी सिमिलर टू गूगल क्लासरूम, but easier than Google Classroom. Google Classroom is also a good one, but that Google Classroom also you can utilize for actually teaching learning process and creating your online courses. I have used it sometime, but better than that I observed PowerPoint slides with our control on. Because Google Classroom has its own control on us. I want to have freedom on my side. As a designer, I wanted to have freedom. Quizlet you can use for flashcard. स्वयं के अंदर जो built in interactive e-content के tool है, they can be also useful. So you should utilize it for creating that. Assessment should be aligned with learning outcome, because this ensures, मैंने पहले भी सेशन में आपको बताया कि this ensures that assessment accurately measures the intended knowledge and outcome. कौन सा नॉलेज और स्किल अपने को लेना है, उस पे से आपको alignment of your assignment with learning outcome is necessary. It will provide you the meaningful feedback on learner's progress. Effective feedback on assessment एक ही है उसका,
It should be very timely. When we were running that drip course for 15 days, today suppose the fellow, we were following very critical timeline कि आपको 12 घंटे के अंदर अंदर वो असाइनमेंट सबमिट ही करना है और उसके बाद में 8 घंटे के अंदर अंदर उसका फीडबैक आपको जाएगा कंस्ट्रक्टिव अदरवाइज, एंड इफ वी आर प्रोवाइडिंग यू फीडबैक देन वो फीडबैक के हिसाब से आपको वो करेक्शन करके वापस से असाइनमेंट रीसबमिट करना है. सो फीडबैक शुड बी टाइमली, कंस्ट्रक्टिव एंड स्पेसिफिक. आप इसको ऐसा ऐसा कर लो नहीं, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जगह पे ये मिस्टेक है, इसको आपको इस तरह करेक्ट करना है. That was offering guidance for improvement and acknowledging achievements. This was the very critical. वो जो हमने 15 दिन का कोर्स अटेंड किया, रन किया था, लेट मी गिव यू द फीडबैक फ्रॉम, उसमें से 5 कैंडिडेट ने उनके रिसर्च पेपर पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश किए हैं, रिव्यू पेपर ऑन देयर पीएचडी टॉपिक फॉर विच दे रजिस्टर्ड, एंड आई एम गेटिंग देयर फीडबैक कि सर वो 15 दिन का हमने डॉक्टर रिसर्च इंडक्शन प्रोग्राम जो किया था उससे हमारे को क्या क्या फायदा हुआ, बिकॉज इट वाज वेरी टाइमलाइन बेस्ड. 15 डेज में वी क्लेम के 15 दिन के बाद में आउटकम विल बी दैट यू विल बी एबल टू क्रिएट योर ओन रिव्यू पेपर. बाकी के 12 लोगों का इंटरेस्ट डिफरेंट था, बिकॉज 17 लोगों में 5-7 लोग जो थे दे वेर रिसर्च स्कॉलर्स, 7-8 जो लोग थे दे वेर द रिसर्च सुपरवाइजर्स. So they wanted to learn the tool. Chalo. So how can instructor provide effective feedback? Yes, by being timely, constructive, specific, and offering guidance. Simulations, yes. कुछ simulation करके आप अगर online user को hands-on experience दिखा सकते हो by using a virtual environment, allowing learners to apply concept in a controlled, realistic setting, nothing like it. And for this, I would suggest to all the people who belong to science and technology, VLab.com is available from all IITs and NITs. Virtual laboratories are available. You can utilize those, they are freely available. VLab.com के साइट पे जाइए आप, वहाँ पे आपको मल्टीपल IITs के और NITs के, इवन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे एंड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अंधेरी, उनके वर्चुअल लेबोरेटरीज मिलेंगे in almost all domains of engineering, be it civil engineering, electrical, electronics, computer, information technology, mechanical, then metallurgy, so many. So 7-8 areas, and there they have the virtual laboratory. Python programming पे, Java programming पे, there are virtual laboratories available. वहाँ पे experimentation. So you can support those virtual laboratories in your online course and integrate it with your courses. So simulations offer hands-on experience in a virtual environment, allowing learners to apply concepts in a controlled and realistic setting. Can online assessment be as effective as traditional one? Yes. When designed thoroughly and thoughtfully, online assessments can accurately measure learning outcomes, often with added flexibility and immediacy of feedback. Immediately आप feedback दे सकते हैं. Please remember the best examination, most difficult examination in the world is JEE. Time magazine का most difficult examination of the world, Time magazine का सर्वे है जिसमें IIT JEE का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट बताया गया. इट इज मल्टीपल चॉइस, MCQ बेस्ड है, उसमें MCQ भी है, MSQ भी है, गेट भी वैसा ही होता है. ऑनलाइन असेसमेंट यू कैन डू बाय मीन्स ऑफ मल्टीपल चॉइसेस. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहां पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हैज पब्लिश्ड ए हैंडबुक ऑफ MCQ, हाउ टू क्रिएट MCQ. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट Stanford University or other university, I forgot the name of that, but very renowned business school है जिनका फाइनल एग्जामिनेशन इज MCQ बेस्ड. MBA के एग्जामिनेशंस आर MCQ बेस्ड. Can you believe that?
And I have seen some of the papers of MCQ based MBA examination, उनके case study जो है वहाँ पे, what they do, they provide a full fledged case study, और उसके मल्टीपल चॉइस में ऑप्शंस रहते हैं कि इफ यू आर द डिजाइन डिसीजन मेकर फॉर दिस पर्टिकुलर केस स्टडी, इसमें से ये 4 ऑप्शन है जो मैनेजमेंट ने डिसीजन लिए हैं, दिस इज द सिनेरियो, और वो सिनेरियो के बेस पे दीज आर द 4 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, और ये 4 ऑप्शन में से मैनेजमेंट ने ये एक ऑप्शन लिया, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको अपीलिंग है, एंड देन व्हाई, एंड दिस एमसीक्यू इज टेकिंग देम फॉर हाफ एन आवर। वो पूरी केस स्टडी पढ़वाते हैं, वो पढ़ने के बाद में उसके 4 ऑप्शन दिखाते हैं, एंड देन उसमें से एक ऑप्शन वो लर्नर को दिखाना है कि विच ऑप्शन ही विल बी गोइंग विद एंड व्हाई। इससे अच्छा अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। When designed thoughtfully, online assessment can accurately measure learning outcomes, often with added flexibility and immediacy of feedback. So proctor-based MCQs अगर रहेंगे तो they will be best assessment technique. Academic integrity comes there. Assessment करते टाइम में अपने को यही डाउट रहता है कि भाई सर ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं सर, कितना डायल्यूशन होता है। You can utilize plagiarism detection tools. यूजर ने ऑनलाइन जो आंसर दिया है इमीडिएटली, अभी तो एआई है, चैट जीपीटी है, देयर फ्रॉम यू कैन फिल्टर आउट कि ये आंसर कहाँ से है। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप जो कुछ भी कोर्स कंटेंट वगैरह अगर वहाँ से जनरेट करते हो तो इट कैन बी इमीडिएट, कोर्स कंटेंट मीन्स आंसर वगैरह अगर आप वहाँ से जनरेट करते हो असाइनमेंट के, इट कैन बी इमीडिएटली डिटेक्टेड बाय चैट जीपीटी ओनली कि इट इज जनरेटेड बाय मी और नॉट। यू गेट इट? So by using plagiarism detection tools, randomizing the question pools, and implementing proctoring software or honor codes, instructors can maintain the credibility of online assessment. Proctor based exam तो इनका चल ही रहा है, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है, दे कंडक्ट ऑनलाइन प्रॉक्टर बेस्ड एग्जाम। प्रॉक्टर आपको कनेक्ट कर देते हैं वो, एंड पर्टिकुलर वे एग्जामिनेशन इज मोर देन ऑथेंटिक। So I think with this, I have indicated you some of the tools which you can utilize for developing the course content. I think we will terminate our discussion here. I'm thankful to the organizers for providing me an opportunity to share my experience with you. And एक assignment करके आप ले लीजिए, select your own topic, maybe for 1 or 2 hours, and then utilize PowerPoint, video recording, and content syllabus बनाइए थोड़ा, 2 घंटे में क्या पढ़ाना है आपको। Maybe you can utilize ChatGPT for creating the content, course content. उसके लिए ChatGPT पे अगर आपको कुछ रखना है, you can request to your coordinator here. एक चैट जीपीटी पे सेशन लेते हैं अपन, हाउ टू क्रिएट कोर्स कंटेंट विदाउट प्लेजिज्म, उसमें भी टेक्निक है। यू कैन यूटिलाइज योर क्रिएटिविटी देयर, वहां से कुछ हिंट लीजिए आप, एंड देन अप्लाई योर क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएट द मटेरियल सच दैट इट इज फ्री ऑफ प्लेजिज्म। With this, I am thankful to you people. At this moment, I find 65 participants online. So thank you very much, all those 65 members, and over to the coordinator, Aniket. Hello. Yes, sir. Yes. Actually, not only 65, sir. Through YouTube, 99 participants are there, sir. अच्छा उधर है. Okay. That's I have not gone that. Okay, then can we close it? Okay, sir. Shall we conclude it, sir? I think अभी users and all my audiences, I am really thankful to them for their patient listening. क्योंकि यार ये टाइम कैसा है, देखिए 9:45 बज रहे हैं, दिन भर काम करके आए हैं एंड ऑल। I am at home at this moment. Yesterday only I finished my candidates viva, so I was relaxing. So during relaxation ही वो सुबह में 11 से 1 बजे तक के अपने चेयरमैन यूजी सर का डिस्कशन हुआ, तो आई वॉज रिसेप्टिव देयर,
एंड उसके बाद में दैट इज द रीजन आई रिक्वेस्टेड कि भाई इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट कर देंगे तो आई विल बी एबल टू फोकस ऑन इट. I really appreciate all the users, 100 users there, learners, audience, Thank you, sir. and hopefully that I could contribute something. At Thank least you, आपके sir. अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर डेवलप हो जाता है, that will be the feedback for me. I will feel rewarded. अगर even a single candidate Yes, could sir. develop a video course और ऑनलाइन कोर्स, एक थोड़ा भी कॉन्फिडेंस अगर आप में आ गया कि सर अभी मैं अगर अली सर कर सकते हैं तो अपन भी कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर सकते? डू इट. थैंक यू सर आपका Thank you, कॉन्टेक्ट sir. नंबर अगर दे मेरा दें। कॉन्टेक्ट नंबर है ना 93701. softalis@gmail.com is my email ID. Soft. ओके ओके सर. SOFTALIS. softalis@gmail.com. That is my email ID. You can send me mail there and I do reply. दूसरा मेरा फोन नंबर है 93701 93701 55150. डबल 55150. हाँ, and Okay. same is my WhatsApp number. I would appreciate if you can identify yourself by sending me WhatsApp and we can chat on WhatsApp. ओके सर. थैंक यू सर. नॉर्मली मेरे जितने भी PhD के कैंडिडेट्स हैं Thank you, sir. उनसे आई थिंक आई इंटरेक्ट ओनली ऑन व्हाट्सएप और थ्रू मेल. So I am available. I will definitely try to reply to your queries and feel free to ask. Don't be shy. मुझे पता है learner should be like a child. वो चाइल्ड देखिए कुछ भी पूछता है उसको शर्म नहीं आती. We should be like that. We should keep our child within us. वो जो गाना है ना, दिल तो बच्चा है जी, वो दिल को अपने फॉर एवर बच्चा ही रखना चाहिए. So that it can without hesitation it can ask any question. नहीं तो ऐसा लगता है कि सर मैंने ये तो इतना सिली क्वेश्चन पूछना चाहिए. क्वेश्चंस आर ऑलवेज सिली. कितना भी बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे आप तो वो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए सिली क्वेश्चन. एंड अनलेस यू आस्क ए सिली क्वेश्चन यू कैन नॉट बिकम वाइजर. ये एक फिलॉसफी है. बच्चा सीखता ही ऐसा है. वी आर लाइफ एज ए टीचर वी आर द लाइफ लाइन लर्नर. टीचिंग कम्युनिटी है, वी बिलोंग टू टीचिंग कम्युनिटी. एक जाते जाते एक मोटिवेशनल जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ. बिकॉज आई एम द स्टूडेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऐसे ही टीचर्स डे का कुछ मौका था. आई रिमेम्बर आई वाज विद डॉक्टर DB फाटक, माय गुरु एट IIT मुंबई, एंड आई वाज कैरिंग द बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय विंस्टन. वो मेरे साथ में किताब थी और मैं सर के पास में जाके ऐसे डिस्कस कर रहा था. तो आई जस्ट आस्क हिम कि सर अपने इंडियन कल्चर में व्हाई टीचर्स आर गिवन सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु एंड ऑल वी से, एंड वी गिव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट. अपन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं. तो ही टोल्ड मी कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो. लुक दैट द बुक एंड देन आस्क मी कि अली मुझे ये बताइए कि चूहे को, एक चूहे का बच्चा, उसको किसने सिखाया कि बिल्ली उसकी दुश्मन है? Who taught that mice कि कैट इज इट्स एनिमी? या फिर बिल्ली को या बिल्ली के बच्चे को, किटन को किसने सिखाया कि कुत्ता उसका दुश्मन है? आई सेड सर वो तो जेनेटिक में रहता है. यस, दैट मीन्स that knowledge is transferred from one generation to another generation by genetics. Then he asked me a question. अगर जेनेटिकली ये इंफॉर्मेशन या नॉलेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर होती है तो व्हाई इट इज नॉट ट्रू फॉर ह्यूमन बीइंग? कि एक डॉक्टर पेरेंट है, डॉक्टर पेरेंट, द पर्सन, बोथ ऑफ देम, एक फैमिली है, हस्बैंड एंड वाइफ, बोथ ऑफ देम आर डॉक्टर्स. सो फिर वो डॉक्टर के फैमिली में जो बच्चा आता है नया, वो डॉक्टर क्यों पैदा नहीं होता है? यू आर टीचर, योर स्पाउस इज ऑल्सो टीचर,
सो बाय डिफॉल्ट अपने घर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का टीचर ही पैदा होना चाहिए ना. इट डजंट हैपन. व्हाई? Who is responsible for transferring this knowledge from one generation to another generation? The answer was, it is the teacher. Teacher, sir. That is the responsibility on our shoulder. As a teacher, we should be honest with ourselves. और जैसे देखिए, आपका पढ़ाने का स्टाइल आपका यूनिक है. अंडरस्टैंड इट. ईच वन ऑफ अस आर यूनिक. मुझे बताइए, अब ये यहाँ पे 62 लोग यहाँ पे है, 100 लोग उधर है, और आपके भी जितने भी पहचान के लोग होंगे, कितने लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिलते हैं? हाउ मेनी ऑफ वी हैव सिमिलर फेसेस? और हाउ मेनी ऑफ वी आर हैविंग फिंगरप्रिंट सेम? मिलियंस मिलियंस में नहीं होता है. ये आइरिस यूज करते हैं हम आजकल पासवर्ड के लिए. आइरिस. What is the signal God wants to send to us? We are unique. Each one of us are unique and we are here for a particular period of time. हम यहाँ पे forever नहीं है, एक particular period of time के लिए है. Our life is running. It is a C program which is running, starting. Main left curly से start हुआ है, right curly कहाँ पे है पता नहीं है. And I will close on that कि आयुष्य हे विधाताचे वहीचं पान असतं. आयुष्य हे विधाताच्या वहीचं पान असतं. रिकामा तर रिकामा, लिहिलं तर छान असतं. शेवटचं पान मृत्यू आणि पहिलं पान जन्म असतं. शेवटचं पान मृत्यू आणि पहिलं पान जन्म असतं. मधली पान आपणच भरायची, कारण तोच आपलं कर्म असतं. आता सध्या आपण जे काय करून राहिलो यात इथे, वी आर फिलिंग दोज ब्लँक पेजेस. मधली पान आपणच भरायची, कारण तोच आपलं कर्म असतं. येताना काही आणायचं नसतं, जाताना काही न्यायचं नसतं. येताना काही आणायचं नसतं, जाताना काही न्यायचं नसतं. मग हे आयुष्य तरी कोणासाठी जगायचं असतं? हे मी नाही विचारून राहिलो, हे मंगेश पाडगावकरची सरांची खूप गाजलेली एक आयुष्य म्हणून कविता आहे. येताना काही आणायचं नसतं, जाताना काही न्यायचं नसतं. मग हे आयुष्य तरी कोणासाठी जगायचं असतं? ह्याच प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी जन्मायला यायचं. आणि ते शॉर्ट आहे. शेवटचं पान मृत्यू ते माहित नाही आपल्याला, पहिलं पान जन्म आहे. डेट ऑफ बर्थ आय नो, बट व्हॉट इज गोइंग टू बी माय एंड ऑफ माय सी प्रोग्राम, राइट करली, आय डोंट नो. व्हाय इट हैज बीन केप्ट सीक्रेट? वही तो क्यूरियोसिटी है. एज ए टीचर वी मस्ट कीप our learners' curiosity on. So with these words, as a teacher, we have much more responsibility. We are transformer of generations. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नॉलेज ट्रांसफर. मुझे बताइए, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो कहाँ से सीखा है? मेरे टीचर से सीखा है. So as a teacher, I have my responsibility to pass on that knowledge, better than that, to my next generation. If we work with that motto, lifetime we will be satisfied. Because satisfaction, happiness and success, इसका benchmarking आपने खुद करना चाहिए, because you are unique. That is the reason I always say कि best creation of God, unique creation of God अगर आपको देखना है, look into the mirror. इन द मॉर्निंग जब अपन बाल वाल या वो करने के लिए, एक बार तो हर कोई एक मिरर देखता ही है. आस्क योरसेल्फ, थैंक गॉड, यस ये बेस्ट क्रिएशन आपने मुझे दी है, एंड आई विल सी दैट आई कंट्रीब्यूट टू द ह्यूमैनिटी अल्टीमेट. बाकी तो जिंदगी गुजरेगी. ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी पेशेंट लिसनिंग. एंड इफ एनी टाइम एनीथिंग हैपेंड हियर एंड देयर, आई माय हार्टफेल्ट अपॉलॉजीज, बिकॉज ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है. No, sir. Thank Okay. you. Thank you. So Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Clear कर दीजिए. Thank you, sir. Thank you. Thank you. So thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you The very day much, sir. begins. Thank you, sir. Thank you so much. Now the day begins with the very warming with Swayam and
MOOCs with the Honorable Chairman of UGC, and the day Correct, is correct. end with and Again, the day you is can end try. with the very philosophical and very thoughtful session on the Swayam and MOOC. And day is ending with the poem of Shri Palgaonkar ji. So Mangesh thank you Palgaonkar. so much, sir. On behalf of UGC HRDC, you have shared Malviya Mission Teacher Training Center. I express my heartfelt gratitude for sharing your valuable time and insightful session on this Swayam and MOOC. And sir, definitely, whatever you have told regarding the role of teacher, we will contribute to the society, and definitely you are blessing with us. Thank you so much, sir, on such an enlightful session. On behalf of UGC MMTCC, again, express my heartfelt gratitude and sincere thanks to you. And with the permission of Professor Ali sir, I would like to declare that this session will be over here. Thank you, Thank you. participants. Thank you. Conclude. Thank you. So nice. Thank you, sir. Thank you.